So good morning. Good morning, Ji. My bag is full of my paper. Oh, don't worry about that. Used to carry small purse and go okay. The bigger I carry, the more number of pages I fill in. Is there any news today? Let's double check. Let's see what clues we get to do today. Today, this is not precious time. The phone number out. Okay. Okay. जो आप बोल रहे थे ना कि आप मुझे वो तो पता चलता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट ठीक है लेकिन आप कैसे वो डाल देते हैं रेजिस्टेंस में और आप लाइक हाउ डू यू गेट इट आउट आप थोड़ा समझ देखें प्राइस नीचे से आ रही थी एक्सपेक्टेड से जब वो S2 पे आई पहले तो मैंने वहां सेल डाल दी तो वो एरियाज है ना 5950 का नंबर था कल और फिर वो दोबारा 60 पे आई तो वहां सेल डाल दिया तो आज हुआ तो मैं लाइव बता दूंगा नो प्रॉब्लम relatively easy. All right, let's. अभी ये इंट्रोड्यूस हुआ प्राइम मार्केट के अंदर वो नेटवर्क शुरू हो गया इसका मार्केट का ठीक है और मेरे को 2222 शुरू हो रहे हैं ऐसी टेंशन का ये महीने इसका आपने केवाईसी करना है अभी ये भी बनाएंगे आपका जिसका केवाईसी करना है तो 829 में फेल कर out of 2024 मैं सारा सेटअप कर दूंगा ताकि अपना केवाईसी करना कब कब है तांडव शुभ तांडव स्तोत्रम
Good morning. Good morning, sir. Good morning. अच्छा अभी खोलोगे तो दिखा दो, पता चलेगा। आप पूरा तो दिखा देते हो सर। All right, let me check Chem 1 is good. Chem 2 is good. Board Chem. Chem 3 is good. Chem 4 is good. So let's put this back up to here. Areas are updated Wednesday. हाँ जी, अगर तो आपने 30 मिनट के चार्ट पे देखना है तो ऑटो स्केल को ऑन ही रखें। हाँ, फिर ऑटो स्केल ऑफ कर दें, ऑटो स्केल ऑफ कर दें। So base is up, pressure is down. Let me double check. What is our strike price? 21,580. Went up 100 points. Let's look at forex factory quickly. New home sales at 10 o'clock, and that is happening at medium impact. All right. Okay, I think we're live everywhere, so let's double check. All right, good morning, everybody. Wednesday, February 26, 9:03 a.m. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining us at superareas.com. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, RTMP, Zoom, everything is working. WhatsApp line is open for questioning if you have any. Good morning, G. So let's look at first thing is first. New Forex Factory, 10 o'clock we have news. Anybody trading oil, watch out 10:30. That's where you have a bit of a maybe volatility for crude oil at 10:30. New home sales at 10 o'clock. So it is a medium impact. So today we will not be trading. Today we'll be looking for an opportunity to make money. So we're just going to switch the thing around. Trading means 9:30 things open, you just hit enter. No, until there is a right setup, green, red, lower lows, higher highs, then we will take, or area. We just won't trade for the sake of trading. So it is I think R1 is done. R1 was the night. R1 is, I will call it a done. So let's not do R1. So let's look at night session high, 21,235. Night session high, 21,200 night session low. So we have not much. So 21,330, sorry, not 3. So 135 point swing, and then you have 21,200 to be. So day session high and lows, we will, so I'm calling R1 done. So invalidating R1 for Nasdaq. Let me double check my other charts. Yes, R1 is done, no problem. Last night I had a bit of an opportunity to test gold, and that worked out okay. Sorry?
कल मैंने डाइवर्जेंस का ट्रेड लिया था शाम को 8:31 में 30-20 पे डाइवर्जेंस लगी थी और $2 निकाल के गोल्ड का ट्रेड बन गया। 2 पॉइंट $2 क्योंकि गोल्ड में डॉलर बनते हैं ना, तो 2 पॉइंट बनते हैं, $2 निकले मुझसे, $220। Yeah. So again, waited for the perfect setup. Price made lower low, made another lower low. 30-20 had a bit of divergence. Large triggers. The moment it twisted, I entered, made $2.20, and I got out. So that was a goal. So स्टॉप लॉस तो मस्ट है ना स्टॉप। मैंने ऐसे किया कि अगर वहां से $300 गिर गई तो आई एम आउट, तो लॉन्ग कर दिया था डाइवर्जेंस के बाद एंड stop loss must. But what the diversion was telling me, like No, it was saying up, right? So diversion was like it's gonna go up. it's yes, because it made a lower low, then it made another lower low, Okay. and so but the strength didn't go Didn't come down. down. So I had a chance. So the moment it made a black candle to upside, Yes. I went in and Okay. So- If the diversion line is like this, that means it's gonna go down. If But the white line if the divergent line is coming in red, in the red zone, in the red zone. it will go up. If the divergence line is coming in the green zone, it will go down. That's it. So let's see the setup today. Gold is only areas. Yes, the MES 1 tick is $1.25, not $2.50. The whole MES point is करंट पासवर्ड लिख देगा इसका यूजर नेम क्रेडिट का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं सॉरी ठीक ब्लॉक move to inbox दूसरी चीज take profit When the indications from green, इसके बाद the price goes down, right? yes. And the best price. Yeah, if the divergence in the red, then price generally. And 30-20 divergence are more powerful. 30-20. They rarely fail. They still fail, but they rarely fail. take profit का यूजर नेम पासवर्ड था trading range you have to wait for your trading Maybe low to go high would be the plan. Let's see how it goes. और फिर निंजा इसके अंदर भी आपको कनेक्शंस में जाके कॉन्फ़िगर निंजा पे जाओ निंजा पे इसको करोगे टेक प्रॉफिट कनेक्ट कर स्टार्टअप और वहाँ पे यूजर नेम अभी आने दो ईमेल चेक कर लेना आ जाएगा थोड़ी Somebody asked me, where is my FTMO orders for today? Let me double check quickly. So FTMO, what am I doing? NQ, FTMO. FTMO, I'm still waiting for the price to go to 20,400 or 20,500 to go long. 20,500. Why are the FTMO? Because you are looking at position trading. FTMO users are not trading every day. They're trading position and they're holding a trade. So I have to look for daily chart. So for a good entry for FTMO has to come down to, price has to come down to 20,500. So almost 800 points from here before it goes and does so. Completely different method of trading.
That's a position trading. That's a little bit separate. 30 minutes में बैठ जाएगा। Let's see if it touches the value area. 59.86 रखा ना आपने? 59. Yeah, and the नीचे वाला 59.45. So your first level of support is your value area. Let's see if it goes and touches it. 5986 Sure. Yeah. You have to watch 60 minutes. You're not watching 60 minutes. Sorry? Yeah, so you have to watch this chart, not this. There's a chart here at the bottom called 60 minutes. Oh, you made it. Okay. Did you change any settings? Okay, close it and then don't save it and reopen it. It will fix it. Because value area, you don't watch it on 1510. I wanted to see next session high. Yeah, so watch from a different chart. Easier. 15, not 1510. Maybe 30 minutes. Maybe 1510 is just for entry. Yes. If we don't watch anything on 15, just the background color. No problem. ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। ये दोनों डॉलर में क्लोज हो गए 23,761 और ये दोनों क्लोज हो गए दोनों। किसी 15 हो गए दोनों में चले गए बाकी आठ का मुझे संभालना है। यहाँ पे तो भी अच्छा है। इसमें से आज मस्त है। यहाँ मेरे 300 So अगर वैल्यू जाएगी तो The rule है value area का first thing is it will try to get inside. So the initiating activity will happen. So this number of 86 is the yellow dot, right? It will, if it cannot get inside, it will go up. If it gets inside, more chances are it will go as low as the bottom. 80% of it will try to fill yesterday's volume. So to say it in a technical term, value area is yesterday's 70% volume, right? So that's number one. Number two, what will happen today? People from yesterday, same users from yesterday will try to buy as close to yesterday within the 7. So it will try to get in. And by the way, who are these? These are bots who are trying to get inside. It's not humans. No humans can push the price that. So price will try to get inside the 86. If it gets inside, more chances are, not 100%, that it will try to go towards 45. That's the bottom zone, right? 46. If it fills it, then the bottom will act as a support and go back up. So the numbers to critically watch is the 86 to 40. However, if it cannot get inside 86 one time, 2 times, 3 times, then it will shoot up. Then it says, you know what, I don't like it. So we are using these value areas as additional support and resistance numbers, right? So if it gets in the value area, yes, more chances. No, you still buy and sell based on trend. Yeah, there's no other way that if it's green, then you buy. So what will happen generally, to explain this quickly before, is if it gets here, right, 86, and the trend is down, then you will kind of, sell towards the bottom. When it gets to 46, I will wait for a higher low black candle to the upside, then I will buy towards the high. So you don't go against the trend anywhere. Only time you do a counter trade is the area. Counter trade is R1, you will sell against the color. R2 against the color. S1 against the color. So there is never a trade. And we were talking this weekend to a couple of guys.
And you know what they say? Sometimes they say, I'm not taking this trade. Let's say R1, right? He's like, no, I'm not taking this first attempt. Yeah, you can miss it, of course. But then they say, all right, I will wait until it touches and turns green. Then I'll sell from here. It's the red, right? So there are different ways to take your trade. What he has said, you have to take it at the first attempt. Whenever R1 hits, you put your trade in and hoping that it will go down. So area trade is the only time you go counter trade, meaning it's green, you're going to go red. You meaning short. If it's green, you will do red, and if it's red, you will. But everywhere else, if it gets inside the value area, look, it's trying one more time, 5990, 58. If it gets inside this number, 86, and the trend is down, we will sell towards it, right? So more chances are it will go to 46. Sorry, sir, again, can you explain the base and pressure again? Base or PP super good. Pressure is, if the pressure is down, that means sellers are getting strong. So the market is poised to go down. But due to many variables. So the expected low is any 5938. event It's that almost happens. close to 5946. Sentiments of people who are trading. So it might shoot up as What well. is more important? Base is important. Both are important. Both are Go good. by the time. You see today, base is up. That means PP super fully. Legal pressure is down. That means it will try to get to. There is no value area for Nasdaq. We don't do value area for Nasdaq. The only areas. It will go down. हाँ जी The value of the bottom is almost close to the expected low. नहीं एक सेकंड जी expected low से थोड़ा सा नीचे 38 से 40 first, but it will test it first. It will test it first before as a support. Oh, it is tested as a support. Yes. 30-20 में डाउन हो रहा है. कैसे आ रहा है? क्यों? मैंने इसको टच करके इसको ऊपर डाउन करी. फाइनल नेट इसका नंबर है. उसको टच किया. टच करके एकदम से ऊपर गई नहीं. कौन सा एक ही जल्दी में ऊपर गई. एक और दे गई ना. बढ़ गया वो देखो मुझे वैल्यू को टच किया और फिर देखिए 86 को टच किया बिल्कुल टू द डॉट टच किया लाइक टू द डॉट. अब क्या करें? देन आई डू आजकल वो स्लैंग लिखे हैं ना SMH शेकिंग माय हेड. मेरे यही होता है ना. और क्या होता है कि वो 86 को टच करके आपको 94 पॉइंट देगी वैल्यू एरिया से. पहला ट्रेड आपका वैसे डन हो गया. 60-minute chart. 240. 60 minutes. 59.86. 45. The yellow. Yeah. Yeah, right here. Let's look at 30-minute chart. Give me a second. You see right there, today, February 26th, right? Yeah, no, right here. This, look at this line, the green line.
green line and but you see these two lines, right? Green, no, watch this. Yes, yes, and this red one, yes. So red and green night session highs and lows, and then you have value area. मैंने सब कुछ पे रखा है, लेकिन मैं इसे में बंद कर देता हूँ, जैसे बोलेगा ठीक है सर, जैसे आगे बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आपको So the value area videos are sitting on superareas.com. Video number 5. 86 is done. Value area first trade is done. I think it's testing 30-20 mid-band maybe. I still think 45. That's my opinion. I don't know. 45 would be my entry. I will wait till 45. So anybody who joined us late, we will not be trading today. We'll be looking for an opportunity to make money. No more just the word trading. Like we're going to go in and look for a setup. Please look for a setup. If there is no setup, you're not touching the mouse. I don't care. Whole day goes without trading. Gotta find a setup. Not that, okay, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से नीचे जाएगी. नहीं. So my first setup, if it gets to 45, 46, I will buy. Because it has two supports there. 59, 46. Number one. Why am I picking and saying this number? It is a 60-minute value area. It is a 60-minute magic man midpoint. If you look at that line that's going through that value area, 60-minute magic man का भी midpoint वो बन रहा है. एक line जा रही है dotted 60 minutes में 60 minute का chart खोलेंगे, एक बिल्कुल dotted सी line जा रही है और वहीं जाके गिर रही है उसके ऊपर. मैं इधर खोल दूं, ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको खोल देता हूँ. 240, ये 60 मिनट का एक चार्ट जा रहा है, तो इसको मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ. I know it's so many lines to watch, but look at this. There is a, you see this black line going, this curvature? It's ending where? Exactly at the value area. नहीं है 60. ये ऊपर क्या 60 मिनट दिख रहा है? 60 है, but maybe I didn't turn on that indicator. नहीं, दो 60 मिनट के चार्ट है. दूसरे में देखें. नहीं, ये देखें, ये मैजिक बैंड के ऊपर है ना, ये मैजिक बैंड नीचे है. इसके दरमियान में एक लाइन जा रही है ना, तो ये लैंड कहाँ कर रही है? वैल्यू एरिया पे. हाँ, थोड़ी सी बेशक कम नहीं. देखिए, मैजिक बैंड अपर, मैजिक बैंड लोअर, मिड बैंड ऑफ द मैजिक बैंड. Okay, so Is that the dotted line? that's the dotted dashed line. So what am I watching for? It on a 60-minute chart, I would like to see my value area is 46. So that's my first thing, bottom of the value. On top of it, I'm getting this magic band line. So I'm considering right now as a strong support. Let's see what happens when the market opens in about 5 minutes. He's going to start his brief. So this is called the magic band midpoint. But I understand like you guys were talking like we got like some points from 59.86. What was the concept of taking that trade? No, value area top. जो ऊपर से आ रही है प्राइस, तो उसने वैल्यू एरिया को टच किया, सपोर्ट बनाई, वापस चला गया.
No, it's fine. Always put a stop loss, but that's your first level of. Yeah. So all these things I've just explained for extra things if you would like to. I know majority will just do a mid-band or an area trade and or bottom of the bar. Or, What do you call this line? huh? क्या कहते हैं इस line को? इस लाइन को कहते हैं मैजिक बैंड वैल्यू एरिया जो that's called the magic band midpoint. So you see these lines, two lines, these are magic bands, right? And in between there is a black line. That's called the Significance of that? again more support and resistance number. So more and more we can figure out where they align at that point. Our Black one is magic and midpoint. exactly. But the upper black ones, upper red ones are magic top, and the bottom blue ones are magic bottom. And then you just like you have upper band, lower band, mid band. So इसके अंदर भी हम magic bands and that tells you the pressure of it. All right. So magic bands are used for pressure calculations. That study is in your video as well. So nothing is missing there. It's just. So he's going to start the brief. I will bridge the mics. So everything should be okay. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Sri Akal. Hello, guys. Game show. A microphone check, guys. Microphone. जी सलाम वालेकुम सर Ji walaikum salam. Ji walaikum salam. Good morning, Choi Saab. Hikesh, Tamur bhai, Ash, Bakas, Saurabh, Alpa ji, Junaid bhai. Good morning. Beautiful. Rakesh, good done for the day. Sunil ji, good morning. Jagdeep, Sukh ji, good morning ji. Clifford, Sanjay, good morning. Good morning sir Gigi, good morning. Nelson, Gaurav, good morning. Sayyid Ali ji, Ahmad bhai, good morning. Good morning, everybody. Thank you. Quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or our training floor not intended as trading advice. Are just meant to enhance your trading decision, but not make it for you. And we take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday, you will make it today. Always be on your toes, always place your stops, and always ready to accept those losses and do what you see, don't do what you think, and treat this market the very first day you treat. And all the areas we have on our superareas.com or on our graphs are not buy and sell offer or buy and sell areas. These are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today, excuse me, guys, actually we're done for the day from R1 very nicely. A beautiful push to the downside. Whole night, if you see, whole night after our 4 a.m. till now, the market just paused at our R1 area and very strongly it held by R1 area. And right now it just getting close to our S1 area. Very nice, beautiful push to the downside. Almost 19.25 points push to the downside from our high, our night session high and R1 area. And mid-band magenta, and price went up 80 points. That's 33, almost 34% push to the upside on S&P 500. Nasdaq went up 74%, 342 points. That's very nice, beautiful push. But I will take swing from the high, not yesterday it gave us a lower high. I'm not going to consider that at 9 a.m. And right now, Nasdaq also bounced back from R1. And mostly people are done.
almost hit our R1, and our expected high for S&P 500 is 60.52 to 62. S&P, our low is 59.38 to 30. Base is up, pressure is down. Base is up, pressure is down. And actually, we knew that price will go down from R1 area. Multi-resistance at that area, and we have a previous cluster as well. So our Nasdaq expected high for the day is 550 to 600. Our expected low for Nasdaq is 21,040 to 21,000 to the downside. Area to area, and also today, very, very important event is coming after the market close. NVIDIA earnings are coming, and we'll see a blast either to the upside or to the downside after hours. After 6 o'clock, a big, we'll see a push to the upside or to the downside. But overall, our S&P 500 base is up, pressure is down. Dow already break our night session low, and almost below PP, and very nice Dow, beautiful push to the downside, 214 points. That's a big push to the downside. Russell start going up. If you see Russell very close to S1 PP, start bouncing back up, and very close to our night session high area. And same thing with the S&P 500 from 78, very close to our, if you see S1 area, and S1 is 79 to 76, actually hit our S1 area, and from S1 it's bouncing back up and get a very nice, beautiful support at that area. So overall, guys, other markets, we have a British pound. If you look at the British pound and our euro are sync above PP in value area, just in between PP and R1 area. And 10 o'clock, yes, we have a new home sales is coming. Canadian dollar is down. Canadian dollar, big push to the downside. It's just keep going down from almost 1.5 week. Very strong push to the downside on our Canadian dollar. And euro, same thing with the British pounds. Right now below value area, below PP, but the move is absolutely same move as our British pound. And crude oil yesterday went down to our extreme area, and right now not much up. And crude oil should create a diversion. Remember, it should break our 68 area, should break and push to the downside. This is what I'm expecting. Should give us a diversion to the upside. Should break previous low and push to the upside. FDAX went to our expected high for the day, and while I was sitting here, it was a little bit below our very close to expected high for the day. Around 7:30 and 8 o'clock it hit, and 100% hit our expected high for the day. And right now, very nice, beautiful push to the downside and almost cover up 50% of night move. I mean, after 12 a.m. the push we had, it covers up. The gold is down. Gold previously yesterday went down, and again today it covers up $45, and right now $38.70 push to the downside on our gold. And guys, copper and silver, please change your contracts to May 25. Anybody who's trading copper and silver, you must change your contract today. And today, this Friday is last day, but you must change today. And copper is down. Copper, very strong push to the downside. Yesterday went up, even above our extreme area, and right now, very close to somewhere our expected low for the day, and heading towards our extreme low for the day for copper. Silver just hanging in value area, just hovering above and below PP, but right now below PP. The big hit we have on our Bitcoin. Bitcoin very terribly pushed to the downside, and Bitcoin again nicely push for 4,100, like 4185 push just right now.
after 7 o'clock, and then big push to the downside. So 14,270 Bitcoin just got crushed. I told you first area is 70,000, and from 70,000 it will go up at least 30,000 up, and then a big push to the downside somewhere 47,000, and that will be a very nice area for the people they want to get in Bitcoin, and also Ethereum. Ethereum is down, beautiful $151 push to the downside, 2382 right now, but our low is same as yesterday. Same as yesterday area, and slightly below S1 area. Natural gas. Natural gas coming down because of the weather. Yesterday, if you remember, it went up to our expected high, and we were expecting a mild 2 to 3 days of this week, and that's why natural gas is coming down. So far, it came down 15 cents. Yeah, 15 cents from this swing high right now. And again, guys, news, we have speech, and also we have our new home sales is coming, and then 12 o'clock we have Bostic speech, and Trump around maybe 5:30, we'll see, but it's tentative. They didn't decide it yet. And again, guys, NVIDIA, very, very important. I think, in my opinion, this price has to go down. We'll see what their earnings are. But be careful. Be careful to do. Today, after hours, we'll see a big blast either to the upside or to the downside. Expected is down. We'll see which way it's headed. Please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. 932 first mid-band, by the way. So now in 1510 the diversion is made in red. हाँ तो ऊपर जा रही है ना, चला गया, ट्रेंड चेंज हो गया डन. अभी 30-20 ग्रीन नहीं हुआ, रिमेंबर दैट. अभी 30-20 मिड बैंड टेस्ट हो रहा है. Let it go green first. Yeah. It is green now. Yeah. Bottom. Going towards R1 again. By the way, area worked as well. S1 worked, Nasdaq S1 worked, mid-band worked. So 3 trades so far. Value area, S1, and then you had only thing bothering me, is the 30-20 doesn't have a higher high. Only thing. But everything else on the 15-10 looks good. So both charts are green. Price is coming from higher high. Mid-band, large triggers are open. So this looks good. वेट करना कैंडल थोड़ा चेंज होगा ना, थोड़ा वेट करना, ओपन चला ना, नेवर नो मिड
ट्रेंड ये भी पे नहीं चल रहा है। All right, let's see which way. Both prices are between R1, S1 synced. Yes. This chart, it's not getting better. Okay, I'm gonna close it. You lost the DOM, right? Yeah. I closed it a couple of times. No, because I think you saved it when you were. Oh. No. Kind of missed the mid band by. Yeah, went down quite a bit fast because Nasdaq, because it was a retrace on 3020. So So the pressure is down, we should go. sell size. I felt I buy and then magenta close. Now 3020 has made not a lower low yet. You see how fast it can change if you don't have a stop loss? $30.20 didn't have a higher high. Yeah. There's a news also at 10. 10 o'clock news. The video results are coming in the evening. 5 o'clock, yes. Waiting for black candle on to the upside on 3020 because it made a higher low. It didn't make a lower low yet. So let's see.
मैं लगा real time data में delay होगा। सॉरी तो क्वेश्चन ऑन द विंडो पॉपअप हाँ लेकिन केड़े केड़े कनेक्टेड ने ਤੁਹਾਡੇ मेरा per dia हाँ पर डे ਨੂੰ डिस्कनेक्ट करो ऐसे तो नहीं कि वो वापस ट्रेडर को एक्टिवेट करना पड़ेगा या अपडेटेड वर्जन देना पड़ेगा। नहीं होना नहीं चाहिए ऐसा। ऐसे एक आया उसमें वैसे टिप्स में वो दिखा रहे हैं। per dia तो delay होंगे। अच्छा भैया मैं WR से आया हूँ No trade for me yet, nothing. Nasdaq wants to go which way? Hmm. 2.75 वाला हायर लो की बात कर रहे हैं। Yes. वो सही गया ना आपका मैंने ले लिया ना ट्रेड उसके वहां पर मेरा स्टॉप लगा हुआ था स्टॉप बाय अभी देखो फोन से लगेगा मेरा ब्लैक कैंडल के बाद स्टॉप बाय लगा हुआ था अब मैं कैन नाउ टेल यू दैट गॉट पिक्ड अप व्हाट डिड आई डू राइट हियर ओके लुक एट 3020 just kind of explaining price made lower low right this is a swing this was a retrace your mid you swing आई ना 3020 price came down then it did a retrace right it didn't have an extension right it didn't make a lower low so it made a higher low right so I quickly calculated this number 5980 added 34 ticks to it wherever that was I'm like I'm going long from there And what do you do there? What? no it's called buy stop Buy stop? yeah because you're buying it above the price and it gave me 3 points and I got out so this was my clue to enter that price swing retrace there is no extension there is no so because of if it made a lower low yes it's a little bit different situation but it made a higher low this was my clue that 3020 is about to change direction to the upside again like this is the setup higher high lower low lower high every single one of you have this picture on your thing right it made a higher low it didn't make a lower low so this is my clue right here that I'm about so what I said all right no problem but I need to make sure this candle gets formed first so I took 5980 I added 34 ticks to it and just 8.5 why I say 34 ticks डॉलर में वो गोल्ड में $3.40 बन जाता है right so I'm not doing 8.5 because it gets confused for gold users I'm now going to be talking 34 ticks so had I held my trade for longer would have taken more money but again this is the perfect setup तो फिर मैं नहीं लेता ना फिर तो मैं नहीं लेता फिर मैं उधर 1510 में आके मिड बैंड टू द डाउन लेता this is 3020 but because same thing can happen on 3020 1510 too it will go lower low and then higher low and then you can पिछला swing जो आया है वो higher low से आया है no 19 ticks on a yes 4.75 19 to 4.75 34 to 6 now we are back into R1 zone guys let's see what happens today from here we are inside
high to go low. So he has said wait for expected high if you want to go short. So I'm not going against the trend selling right now. R1 is done. So hold your hand. Don't think that R1 I gotta sell now. Yeah, you could have taken maybe a point, but I'm not selling. Yeah, buying is good. Both are higher highs now. Look, both charts became higher highs, right? So this is a good buying setup from the mid-band. And of course, color change, you exit. That's right now, both charts are 100% now. Both are higher highs. Both are higher highs. Both are green. So your buying should be around 59.84, 59.94. For ES 1510 mid-band. A company, sorry, A company. आपको ये सेटअप मिल जाए ना जिस तरह ये अभी आया 30-20 का gives you good points. हाँ हाँ साथ. So don't go against the trend, please. R1 is done. Sound. Sound is okay. All right, so broke R1. So it doesn't matter. Doesn't matter. It can do a retrace. So you may want to switch your mid-band to 30-20 mid-band if you feel it's a little overbought. So switch to mid-band to the 30-20. But funny thing is they're the same at this price. Right now they're very identical. Nasdaq touched R1 too. Let's see which way it wants to go. Hopefully this mid-band will stay solid. Okay. Both are green. Large triggers are green. My stop loss is 6005 minus 8.5. That's where my stop loss is. 6005.25 minus 8.5. So 5996.75 is my stop loss. So $1.25 I'm risking only $1.25 because my entry is at 5998. Yeah, so my risk is my what's the mid band right now? Sorry, 5997. So you have to take 30-20 mid-band? I'm taking 30-20 mid band in this case. Okay. Because the price is slightly overbought, like नहीं आई जी मिड बैंड पे डाइवर्जेंस लगा दी है
So I'm sitting at 5997. Mid band of 60 minute is sitting as 6010. Let's see. I think you will create a divergence line now, right about any second. You have a black candle, you have a divergence line of 1510. That means the chances of trend to go there. A divergence line came, so that's why I'm sitting at a mid band of 5997.25 to be exact. Oh man, don't say that. हाँ हाँ तो वो 1510 की तो बहुत ही short lived. It missed my order by 2 ticks. Sorry, मैं तो बैठा हुआ हूँ अभी. 599725 is where I'm sitting at. 5997.25 is my mid band of 3020. नहीं उसका नहीं, मैं अब 3020 देख रहा हूँ ना. Give me. ये लोअर लो अदर साइड पे लगेगा. अगर अगला लगा हायर क्या लगता है ऊपर लोअर हाई लगेगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा साउथ जाने पे. All right, my order got picked up. Let's see. I got a point already, 2 points, almost $75. Let's see. आप 1 point लेके ठीक है जी, no problem. It's okay. जो आपको इजी लगे. मेरे 2 पॉइंट हो गए. लाइफ का पहला पॉइंट नहीं लाइफ का नहीं सर, आप अपनी उसे सही रखेंगे कोई मसला नहीं आएगा. No. I did not take. I only took 30-20 mid band for 2 points. हाँ लेकिन वो जब सेटअप बनेगा ना, मैं आपको बताता हूँ. अब अगला सेटअप डाउन. If you have taken more points on 30-20, you're trailing. So when you have a divergence on 15-10, switch over to 30-20 mid band. That's a stronger support there. हैं? I don't know पहले आपने लॉस क्यों किया. हाँ पहला वाला ठीक है. मैं उस ठीक है नो प्रॉब्लम. सिर्फ अगर दोनों चार्टों का सेम होगा ना, हायर हाई, वो मिड बैंड सेफर हो जाता है आपका. So this mid band gave you almost 97 to. There you go. So wait for the next setup now. We will wait for the next one. The moment, but what color changed them? So I told everybody we have to take a mid band on 30-20 because it's overbought. So everybody placed the trade on 30-20. Up divergence आएगी 30-20 में. So if it breaks 6005, it will, price is going up, but look at the strength is not going up. Strength is not going up. There you go. So that 30-20 mid band was a beautiful trade. Anybody who's trailing, they're trailing. It's no problem. If you're after 2 points, 1 point, solid. Now we have a divergence. How do you take this divergence now? Name. Okay. 6007 minus 8.5.
That's where the black candle will form. 5999 minus 6 कितना पे चेंज होता है 4 पे 5 पे 30-20 का ट्रेंड 5 पॉइंट बाद चेंज होता है so 5994 when the price goes there that's where divergence will get confirmed अभी black candle पे line आएगी ऊपर एक so when you have a black candle you will have a line on 30-20 so don't take that mid-band of 30-20 please that's all that line is going to say news now at 10 o'clock let's see which way it goes pending homes new home sales yes thank you Ji. news good morning Ji. So all right if the strength goes up then you don't have a divergence the news kind of came and went today was nothing crazy new home sales are less much less so new generally is red to go down but let's see maybe it'll create a divergence and come down where am I seeing the divergence 6005 next number is 6007 अब देखें lower high आया 30-20 15-10 पे lower high आया ना तो ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि अब यहां से मैंने नीचे जाना है 15-10 पे डबल टॉप आया अच्छा मुझे ईएस पे double top is a divergence too technically so 6007 minus 8.5 5998 50 that's where color will change at 5994 30-20 color anybody took that second mid band coming down from 6007 वो भी mid band नीचे ही आ रहा था 1001 पे divergence is still valid all right it's third Nasdaq is breaking your R1 I think it should return from 6010 60 yes that's it because that's the 60-minute mid band so waiting for the price to go to 6110 6010 because the 60-minute mid band is sitting at that price technically speaking yes but let's see 6008 minus 8.5 5999 did you buy green missed it
Just be careful. 30-20 has a divergence. नहीं कैंडल नहीं बन रही ना. कैंडल बनेगी तो डाइवर्जेंस की लाइन आएगी, आनी चाहिए. 2 more. MES पे आ गई होगी because slightly different volume है. ES में अभी नहीं आई. ES में इधर भी नहीं आई. अभी तो ये गैप ट्रेड बन रहा है. It's a divergence on 30-20. Look at the strength. 30-20. It didn't go up. 30-20 strength. So that's why I was saying don't take that midband. Yeah. But I think the gap trade will finish and then make a full candle and blast to the downside. That's where I'm expecting. But let's see. अभी तो 30-20 का मिड बैंड ब्रेक होगा तो फिर पता लगेगा. Blue is buying, red is selling. Another mid band 30-20. But look at the divergence line got created. But divergence didn't, So that's why I was waiting for. मेरा ख्याल अब आ जाएगी, अब ब्लास्ट आएगी. अब मैंने वो करके रखा हुआ है. आप कहाँ पर हो? 59925 पे या 50 पे? 59999.5. ओके. से क्या कर रहे हो? ये सेल करें वहां से. So what he's waiting for is 5999.50. Black candle will confirm to the downside. And then he wants to go along with that black candle. So the moment black candle exactly happens, he will take a short trade. So he has put a trade called stop sell order because it's below the white line, right? So it will be happening in future. So if you want to buy something in future, that's called a buy stop. If you want to sell something in the future, that's called a sell stop. Limit. उससे पहले स्टॉप लिमिट नहीं कर रहा कभी. नहीं वो स्टॉप लिमिट करना है कि बाय होगा तो स्टॉप लॉस होगा ना. Okay, let's do it this way. This is the price, right? If you want to buy here, stop loss would be called a sell stop, right? After buy. But what he's trying to do is, what's the number of upper Kaji? 6008.75, right? He doesn't want to sell. What he wants to do is minus 34 ticks or 8.5 points and then sell from here. So the order is called sell stop.
So in future, I want to sell it, not right now, in future. But his number has changed, by the way. You know what the craziest part is? My order was at 60010. वहां पर sell order लगाया हुआ था मैंने. So 0.75, it kind of messed up. But let's see. हाँ जी, हाँ जी. अब तो सर इसने बड़ी any Now 6009.75 minus 8.5. almost my So 6001.25. मिड बैंड ठीक है नहीं थे. डबल डाइवर्जन जी. ये don't take this minute. आप तो sell कर सकते हैं 90 को. सेल करना है तो 6001.25 के बाद करें. 25 के बाद सेल करें. यार ये माइक्रो में देख रहे हैं. माइक्रो का नंबर व्हाट एवर द हाईएस्ट नंबर है माइनस 8.5 शॉर्ट. आपका माइक्रो का मिनी कॉन्ट्रैक्ट नंबर. Yeah, still testing. 30, 20, 60-minute mid-band. There you go. My order got picked up. All right, it should stop now, I think. I think 15 R2 is coming soon. Against sell नहीं करना सर. कलर के अगेंस्ट तो नहीं sell. ठीक है. Very good. लेकिन अभी आया तो नहीं ना. अभी तो वहां आएगा तो देखेंगे ना. अभी ये फेल हुई है. दोनों फेल हुई है. R2 should work good. Don't know message. It's only 3-point difference, right? So let's see if it touches a mid band and wants to go to R2 now. मुझे तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन सही है. मुझे कोई इसमें Yeah, but it's too far. Still, we have to wait for the price to 6008. Because both are coming from higher highs, so.
Mid band on 30-20 because this it's a bit of a weak divergence, I think, but let's see. Did you pick up that midpoint? Because there's a line on the 1510, Yeah. so but still it's 30-20 midpoint, maybe? 30-20 mid band. But still Nasdaq wants to go up and up and up. I think enough rally for 5 days is done for नीचे जाते जाते. तो देखते हैं. Nope, missed the mid band and I'm gonna go to Arthur. yeah, next is R2, right? Enough 5 दिन की rally हो गई. Yeah, there's a requirement on not EA, PA, 150 per day on your PA. Yeah, 60-minute commitment. So So if it crossed 60 minutes, then what does it mean? then that was just a extra resistance support. उसका कोई ताल्लुक. 15-10, 30-20, 30 minutes, 60. Yeah. हर midband पे resistance मिलेगी. 60 minutes के खिलाफ पे resistance थोड़ी सी मिलेगी. Okay. फिर वो उसको क्रॉस कर पॉइंट ऑफ स्टॉपेज जैसे करते हैं. Correct. हाँ, तो जो स्लो डाउन कर दिया मार्केट. R2 is very close, guys. We are inside R2 very soon. I have order 6026. ठीक है. Short, right? Short. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, wherever it can. Computer has predicted numbers that from 23 to 26 it should turn. Nasdaq is very far though. Nasdaq is 450, 21,450. Minus 21, almost 100 points, and it today ES is out of sync. 100 divided by 7, 14 points more.
But usually when it goes to resistance, it doesn't touch and come back. It comes and then हम 2 दफा हो जाता है, लेकिन पहली अटेम्प्ट में हमारा एरिया इनवैलिड हो जाएगा. पहला अटेम्प्ट आपने सेकंड अटेम्प्ट में लेना है. लाइक सेकंड कंप्यूटर ने ये कहा है कि बाय देन 23 to 26 it should do it turn. the problem is if you put at 27, 25, it may go down. Yeah, so another mid band is coming. Let's see. Yeah, 6013.69. वहाँ की बात ये है कि वैल्यू एरिया में वापस आने की कोशिश भी नहीं की. इन वैल्यू एरियाज ने बस टच किया और But if it has to go to the value, that means it has to come down a lot. oh yeah, big time. You never know. क्या पता Pressure is down. R2 को पकड़ के टच करके एकदम से नीचे शूट डाउन करना है. अभी तो लोगों से स्टॉप लॉस है. But if you're in green, then no trade at all. सबसे अच्छा है 30-20 का मैटर. Slowest. Reversing on a trade, I generally don't recommend because और माइनस नहीं होगा. और माइनस नहीं होगा. जाए ऊपर ही बढ़ावा. 15 में डाल. Nasdaq still has 100 points to R2. ये भी डाबल ट्रेड नहीं है. 30-20 का डाबल वो भी फेल हो गया. देख रहे हो डाबल 30-20 की डाबल फेल हो गया और इसमें नया हायर हाई बना दिया. अब ये शायद उस डायमेंशन में पीछे से प्रेशर है. पीछे वाला 30-20 में बैठे हैं. देखेंगे क्या होता है. Thirty 20 mid band worked. चल गया है 30-20 mid band. 15-10 का नहीं. 30-20 mid band gave you 2 points already. Your data is ahead of us. मेरा तो ऑर्डर भी नहीं हुआ था. Your data is faster than us.
नंबर कितना जी ये इसका? सर ये चल रही है पीछे 601117. There's a fraction difference. ठीक है. नहीं सिर्फ ये नंबर आ गए ये नंबर तो आ गए फोन से करना डाटा मैसेज करना नहीं फोन तो किया वो लेकिन कई बार नंबर मैच नहीं करता है. एक टाइम पे एक अकाउंट हो हाँ एक कंपनी के साथ चल आप बोलिए वन कोडिया बंद कर दो हाँ इसका किया वो. Anybody took 30-20 mid band? No. ठीक नहीं है. Pick नहीं हुआ. लगाया ठीक नहीं है. तो हम काटता हूँ मैं. ये किस प्राइस पे लगा हुआ था 6011 क्योंकि 1125 से गया वो. हम काटता लेकिन वो उस नंबर पे आया सीधा. लेकिन ऑर्डर नहीं पिक. ओके 525 के लाया. बस ऑर्डर पिक नहीं आया. No, I have not. Don't take that mid band to the reversal, guys. Price is not coming from a lower low on 30-20. It's doing a retrace. Don't take that mid band on sell on 30-20. Sorry? Any test दीजिएगा. 696. All right. Didn't get to R2 so much. Missed it by a couple of points. Anywhere. I think there's a spot right here.
maybe. इसका फोन क्या है इनको पता है कि वीडियो पे है कौन सा अगर हम 30-20 से अगर ब्लैक कैंडल फॉर्म हो रही है सर अब मैं कहाँ से सेल करूंगा? ये स्विंग रिट्रेस, ठीक है ना? यहाँ देखें ये स्विंग बनी, बन रही है स्विंग, ये रिट्रेस आई, इसकी एक्सटेंशन नहीं बनेगी। अगर बनती है ना, जो उसकी जो ब्लैक कैंडल नीचे बनेगी वहां से मैं सेल करूँ। Swing right here, right? Everybody sees this as a swing, right? Yeah, the bigger one is called the swing, right? This is a retrace. So that's why I said, everybody, don't take this mid-band. Don't take this mid-band. Don't take this mid-band. Price is not coming from a lower low. Price is, even though it's coming from a lower low, it's not coming from, this is not a perfect setup. Because it's doing a retrace. Swing, retrace, extension. If there's no extension, why do it will make this will become the swing, right? So what am I waiting for is, if this is a lower high, remember now it's set up has reversed to the bottom side. If this is a lower high, now this becomes swing, right? Everybody knows this concept. Swing, retrace, extension. There is no extension, so this would become a swing. Everybody with me? If this is a swing, this is a retrace, extension to the downside, right? But where? After the black candle. So whenever there's a black candle to the downside, then I will sell. Because I'm following the last two moves. Swing, retrace, there is no extension right now. If there's no extension, I'm waiting for this to become my swing. This will become my retrace, this will become it. So right now, whatever this number will eventually get, minus 8.5 or 34 ticks will become my my entry point to the sell side, to the sell side. Because this is my first indication that it's not making a higher high. So there's no, this is my first indication, just to go down. So that's why when I looked at this lower low, everybody says, hey, this is bearish, I would like to sell. But no. Why? Because I saw this as a higher low and I said, don't take this mid-band. The charts are not aligning properly. So this is doing a swing, retrace. So again, we write swing, retrace, extension. Okay. There's a swing, there's a retrace, there's no extension right now. So what does this mean? This becomes your swing, right? This becomes your retrace. And I'm waiting for an extension to the downside, right? Where will the extension begin? Black candle to the downside. So 6015.25 minus 34 ticks, or 8.5. 6.7. Yes. मतलब 30-20 से ब्लैक कैंडल बनी रिवर्स अभी नहीं बनी, हाँ बनी ये, लेकिन ये स्विंग एक्सटेंशन की बढ़ रही है ना, है नहीं? हाँ हाँ नहीं बढ़ा, हाँ नहीं बढ़ता ना इतने थे, क्योंकि मैं इस चीज को देख रहा हूँ, स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन नहीं आ रही, ये नहीं एस वास्ते 601525 minus 8.5 would be a good entry towards the downside. So 601525 minus 8.5 works to 6006.75. 15 minus No, 8.5. Against gay, though, you exit the trade, but you know. .75. That would be my black candle to the downside. Yeah. So what? So where am I picking up my black candle? Swing, retrace, extension. No extension. Take this number
minus 8.5 will be my black candle to the downside. That's the beginning of the top of the black candle. Yes, actually the fourth candle, true, like some users. So let's see which way, how the theory works. Let's see. There's no mid-band anyway. It's not coming from higher high. So there's no mid-band. So 30 to 1510, there's no mid-band. Please remember, because it's not coming from higher high. So just waiting for a black candle to the downside. Will it happen in trend? That's another extra math I'm trying to do. 6010 minus 5. Very close to a trend to the downside. Oh, no black candle yet. Can we see the board? Yeah, I'm just explaining it on right here. So here you can see which mid-bands I'm taking or not on 1510. Just watching this whole thing play out properly. Then you're like, I'm not taking every mid-band, right? So remember, there was no price was not coming from a higher high. So that mid-band I'm not taking. So now black candle becomes No, not yet. No, I'm not taking that mid-band. Another black candle comes from 6007. Yeah, to the upside. 6015 minus 8.5 nearly 6007. 1510 is not 8.5. 3020 is 8.5. This is 4.75. On this smaller chart, black candle happens differently. On bigger chart happens differently. All right, this is a bit exciting. Let's see if it's a true extension or not. We are just waiting to see if it's an extension. All right, going back up to R2. You know where it will get to know it's an extension? When it makes a higher high. So that will become the extension. Yes, correct. Okay. We don't, Ninja is fine, but just need Quan Tower. Wait, not yet. Because the 3020 is coming from a lower high yet. So I'm not taking. They have to be to get the best way possible, to get the higher highs and lower lows. So either wait for 26 R2 upper range, क्योंकि पहले वो 20 से आ गई है, तो you know. From there. Should go down. Should. And then we should short it, right? So 601725 minus 8.5. 600875. Black candle didn't form yet. Price is severely confused. So 601725 minus 8.5 would be 600875. That's why I ask you not to take a mid-band, because the other chart is not a higher high yet. था नहीं करनी थी क्योंकि वो उसकी एक्सटेंशन बन रही है. अब ये स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन फेल हो रही है, तो ये अब इसकी एक्सटेंशन बनेगी. So again, whenever there is a black candle form here, this will become the swing.
Technically, yes. At this minus 8.5, you should be able to sell and make some. Problem is, Nasdaq is too confused. This is all too confused. Swing, retrace, extension. No, not even a black candle to the downside. No, nothing yet. Nasdaq just shot up completely. And that's why you don't take a mid-band selling, because remember, the colors are very, very critical for the right setup. Remember, in the morning I kept saying, we're not here to trade, we're looking for the best setup. Trading, anybody can blame me, a blind person. I'll put 2 buttons, buy, sell, 50% they will win. I'm waiting for the right setup, and my right setup is saying 60875 is the best setup at the moment, because that's a black candle to the downside. So those that are watching the 1510 mid-bands, remember, this mid-band came, even though it was green, but it came from a higher high. I mean, lower high, so you don't take that at all whatsoever. I asked you not to take this mid-band. Then I said, don't sell here, don't sell here, don't buy here. None of these are making sense. Why? My 30-20 is not talking to me properly. They're mismatched, right? So you just have to make sure both are higher highs and lower lows. This is the best setup for a mid-band trade, right? Either you stick to 30-20 or 15-10 mixture together, right? So, And if this scenario is there, yes. but it's coming from the area, Yeah, it's still okay. Like the area is okay. Divergence, it's failing. When there's a divergence, switch to 30-20, right? because naturally you said, there's no mid-band when it's coming from the area. Yeah, generally, if it's like R2 expected high, जो बड़े वाले areas हो ना, वहाँ पर जरा The stronger ones. मैं ये कहता हूँ सिर्फ 30-20 पे switch कर दे. Okay. हाँ, short term है, तो फिर bounce हो जाएगी. Okay. No trade whatsoever. No trade whatsoever. नहीं, ये ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, उसको आप छोड़ दें. 15-10 है या 30-20 है, यहां देख लें. स्विंग, ठीक है, रिट्रेस आई, यहां पर हाई हाई नहीं बना ना, तो मेरा ट्रेंड की एक कंडीशन आ गई कि अब क्या होता है. आपको वो बताया गया है, हायर हाई, हायर लो. Generally higher high, higher low. This is the class number 1 is, right? That means trend is continuing. Higher high, higher lows, higher high. So the first reason to see if the trend is going to continue or not is this lower high. That's your first sign. The price is not going up anymore because of this lower high. So where am I waiting for? A black candle to the downside is from that lower high. Lower high minus 14. Yes, correct. Or minus 8.5 on a bigger chart. So swing, retrace, we're starting to see some extension, but extension will get confirmed at 6020. इसको क्रॉस करेंगे तो एक्सटेंशन बनेगी ना, और हमारे एरिया में भी आ जाएगी दोबारा. अभी ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, मीनिंग कि यहां हमें ब्लैक कैंडल नहीं मिली यहां पर, तो व्हाई वुड वी एंटर इन सेल ट्रेड? I need a black candle to the downside to be able to confirm a trend change. Higher high, higher. I wish everybody, I have a picture on the PDF. I made it. It's in, what do you say, Power of Trading, Yes. page number, I think 18. This is the picture it looks like. On all of you guys have a PDF. This is a picture when I got the course. This was my background for at least a year. Trust me. Like I just watched it to see
if I can recognize this. So higher high, just like it says on the picture, higher low. This lower high is telling me my trend is not continuing. So lower high, 6018.5 minus 8.5 is my black candle to the downside. So the basic question, what is the significance of this 8.5? Okay, basically with every chart, we have a mathematical calculation built in. On a 1510, the black candle will happen at 4.75 or 19 ticks. On 3020, same formula applies for 34 ticks. Some users don't care 1510. The way the market these days moves, I think 2 years from today, we'll be looking at 3020 and 6040. 15 years ago, there were two charts, 805, 403, because the market moved 20 points maximum. Then we shifted everything at least 5 years ago to 15, 10, 30, 20. Now looking at this is going too crazy even on 30, 20. So we may drop 15, 10 and then say, hey, 30, 20, 60, 40. We're looking at a buzz. So, but the 60, 40, then your candles are slightly at 40 rather than 20. But anybody who's looking at the same thing, right? You have, right here, I decided to buy, by the way. This was my entry to buy. It made a lower high, then made a higher low, put a black candle up to the upside. I didn't take 25 points, I took 3 points. It's okay, no problem. But at the bottom, it just kept going. Again, mid-band, even though divergence failed, mid-band failed because it was coming from, let's say, even if you took a stop loss here. But now all I'm waiting for is 60185 minus 8.5. When I'm buying, Mhm. when I'm buying here, and lower high, down. You're not buying I here. consider only 1510 or I No, then if you're not considering 1510, then only 3020. Then you don't care about the lower chart. You're trading on a higher time frame. you only consider this chart. Correct. Why you will consider will it will come into the green territory? नहीं देखिए मैं ग्रीन है ना, लेकिन ये मेरा पहला सिग्नल था कि यहाँ से प्राइस से ऊपर जाना है. मैं क्या कर रहा था, सिर्फ ब्लैक कैंडल का वेट कर रहा था कि टेरिटरी में आ जाएगी ब्लैक कैंडल के बाद. So where did you put your? So I took this number, I added 8.5, and then I went long. So you put your Buy on the top. So here's let's look at this. Give me this number, 601850, right? Let's minus 8.5 from here. It's 6010. Okay, no problem. So I want to sell it in the future. I don't want to sell it right now, right? So that's we'll call a sell stop. So Sim, what's the number? 60? 6010. There you go. So I will go right here and I will pick sell stop. Sell stop limit. Come on. There. So where I have done what I have done here, I've said, all right, I have a swing, I have a retrace, I have no extension. So this becomes my swing. Swing, retrace, extension, right? So right now, swing, retrace, extension, right? If I don't have an extension to this 20 number, this becomes my swing, correct? If this is my swing, what does this become? My retrace, right? So this becomes my retrace. Then my extension to the downside would be bigger, right? Swing, retrace, extension. That's all the formula is. It changes nothing, like year over year, 60-minute, 30-minute swing, retrace, extension, swing, retrace. So the mid-bands are okay. Mid-bands are fine for beginners, but you have to now start learning which mid-band to take, which not to take. The best mid-band is when the both charts are green, both are coming from higher high, and then the price is at a mid-band, you will go no problem. So this is, I deliberately ask you not to take the last 4 mid-bands. They would have hit stop loss because the price is not synced right now with the bigger time frame. All I care about is 6018 minus 8.5.
I will have a black candle to the downside, and hopefully it will bring me down along with it. That's where I'm waiting for the black candle to the downside. Yes, yes. Let's see how it plays out. I'm sitting at 6010. I tried to make a black candle a couple of times. Let's see. Because Nasdaq is pushing slightly. So until my setup is correct, I will not take a trade, please. Still, no, didn't like it. Went back up. So I'm not going short until a confirmation of a black candle. Like, again, I want to make sure I have a black candle. Otherwise, you're going to say, you're going to enter a short here and the price is going to bounce back, right? And then you're like, oh my God, I got stuck. Either do a short at 23 to 26. That's a short position because that's an R2. Or you go with the trend to go buying up. Or if I want to come down, I have to get my black candle in. Otherwise, this is... And if you can really to focus on this on ES, there's so many points hidden. Well, you know what will happen otherwise? You take a midband, it works, and then your net midband takes away, another midband works, and if you can just see which midband I will take and which I will not, right? So, And it's still valid though. Sorry? It's still valid because still I have a 6018, still valid right here. So my order is still sitting at 6010. That's where the black candle will form. If you want to be even more secure and not have a losing trade, wait for the black candle, wait for the trend change, then start selling on the top of the bar. That's an additional layer of saying, hey, I don't want to take just the black candle. I want for the black candle to form a direction. Then I will sell top of the bar, just like here. If I look at this, so two things can happen for me. I always say two things. Why? Because, where's my mouse? Did I lose my mouse once again? No, I don't know where I put my mouse. खा गया हूँ. No, man. I know I'm blind, but not that much. Yeah, they're kind of blind. All right, so I decided to take a trade on this black candle, right? As you see, lower low, lower high, made the first higher low, and I decided, you know what, I will enter here. And price just kept shooting up and up and up and up and up and up, right? That's one out of two ways. The second way is that this person waits for their background to turn green and puts their order at the bottom of the bar. That's called the low of the bar. However, look at in this one, I never got a single pull, like retrace at all. So until a midband here and a midband here, right? So you can take a trade from the black candle, the moment black candle forms, or you can take a trade and wait at the bottom. So it's up to you which trades becomes, but wait for the setup. Now it's very close. My extension is continuing. So my trend is continuing right now. Like you have to keep erasing this way. Yeah, थोड़ा दूर यहाँ पर हाँ. अभी भी मेरा ये ऑर्डर वैलिड है 6010. थोड़ा सा नीचे चला गया, थोड़ा सा ऊपर. कितना चला गया? आई थिंक 11 पे. So it would be 6020 minus. Yes. 6011. Even though looks like it's heading towards R2. Yeah, it's fine. So but we don't go short until we know a black candle to the downside. We don't go short. Yeah. So it would be what, 601150? Yeah. Let's see.
Come on. So now the black candle will form at 6020 minus 8.5. yeah. 11 ये नीचे जाएगा ना थोड़ा सा वापस आएगा जब ब्लैक वैल्यू बन जाती है you have to make sure it's going down because sometimes it doesn't like this जैसे suppose ये same scenario ये वाला ब्लैक वैल्यू प्रॉब्लम होता है क्या आपको पैसे बनाने हैं हाथ से खड़े के हाथ से that will add from here 8.5 बार बार तो रेजिस्टेंस थोड़ी है रेजिस्टेंस थोड़ी in 15 10 in 30 20 if you do it you don't look at 15-10 No, I'm not. if you do 15-10 you have to look at 30 yes this is 4.75 yes you have to half of this or double of this whatever नहीं अगर 30-20 है तो 15-10 times ये चार्ट की so जरूरत everything is 2 times so और this अगर one 30-20 कर रहे $135 तो this 15-10 $250 15-10 कर रहे हैं तो 30-20 से कंफर्मेशन चाहिए Okay. 30-20 yes 15-10 बच गए आप Where's the base, please? Where's the base? I just want the theory I was going with that original approach. Eight out of 10. This was not working. If you take the best setup possible, so I just confirm one thing. He said if you truly want to be sure, add a tick to it, 4.75 to 5, and then 8.5 to 8.75. So because black candle will then truly confirmed at like 35 ticks. So I had to ask him that, hey, sometimes I take a black candle and it reverses, right? And he says but another confirmation he put in, black candles that do come in the trend are much better than outside the trend. Meaning that, okay, remember this black candle will come in the trend. ये जो ब्लैक कैंडल आएगी ग्रीन में आएगी ना तो जो ब्लैक कैंडल आए इन ट्रेंड उनकी पावर ज्यादा होती है ओके ये ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड आई नहीं अपसाइड नहीं मैं मिड बैंड को इसको इग्नोर करें ना हम ब्लैक कैंडल के ये ब्लैक कैंडल इन द ट्रेंड आई राइट इन द ट्रेंड आई तो चांसेस है ना ज्यादा इसके के ऊपर जाने के इन ट्रेंड में जो ब्लैक कैंडल आए उसके चांसेस ज्यादा होते हैं इन डायरेक्शन उसी डायरेक्शन आ रही है ना तो अगर no what I was saying is if you have a black candle to in the same direction I mean trying to But in the trend, then we prefer to take mid-band. Mid-band gives you the correct, but if you miss the mid-band, Okay. if you miss the mid-band and you said, right, I missed it here, so this is in-trend black candle. But generally that will happen after mid-band anyway, right? So that's, if you miss the mid-band, in-trend black candle is the highest accuracy. But let's go back to see our theory first.
It may, I think it will go and break even like the 5 days. It's been just one way down, right? So let's see which way they take the market today. Would you mind explaining again what you discussed? I just asked them that if I am taking a black candle trade, well, what is my 100% surety that it can? He just said, add one more tick to your entry. So 0.75, 0.25, that is your, so let me look at, so here's my black candle, right? 6020 minus 8.5. He says if you put 8.75, that means that it's definitely going down, right? So yes, it won't pick you at the black candle, at the next one tick, right? So, well, let's see. So that's why you don't take these mid bands, and you're gonna say, why am I taking a mid band? 50% are failing. So if you just swing, sorry. Based on what you just said. Yes. When do we want to? So 6020 minus 8.75. And you gotta generally take about a point and get out. Have to leave it Yeah, okay, no more. It's all done. Remember, swing extension got formed. Yes. Now we have an extension to the upside. So going back to this, so this scenario passed. Swing, retrace, you have an extension now. Right? So it means a trend is continuing. Right? Now this becomes your swing, remember? Yes. Right? Everybody's back to the basics, right? So this has become your swing now. Of this 30-20 mid band. So swing, retrace, extension. So what is the pseudo code? Does extension is now swing, right? So now let's do this and make this new one. This is a swing now, right? So now we wait for the again a mid band to the down. Let's see if there is an extension or not. Right now we have a true swing, retrace, extension. And extension has become your swing. So, I know it starts to unlock very soon. Then you're like, all right, I'm taking the mid bands or I'm not taking the mid bands, right? Yes. Take the mid band. Because now this is a swing here. This is all finished, right? This is invalid, this is invalid. Now we have a swing. So now this mid band, if it goes up, generally should, extension has become a swing. Now somebody should do a back testing. How many times an extension fails? Right? 6022.5 minus 8.7. नहीं, अब वो खत्म हो गया. अब वो मिड बैंड वाला ट्रेड आ गया है. सिर्फ वो उस वक्त तक वैलिड था जब यहाँ पर लोअर हाई, यहाँ लोअर हाई. हाँ जी, बिल्कुल. See, hopefully it's unlocking slowly. I know it takes a while. The biggest concept for me to overcome, biggest one, was divergence. It took me 2 years to figure out, hey, how can I plot? Now I can just see a divergence from, I keep watching this. He pointed right. This was a divergence right here. I just look at my strength and price. Even I have a divergence at home. My son is 6'2", but in age he's only 18, right? So when I stand, I'm like, there's a divergence, age versus height, right? So that's how we kind of see things at home, right? I'm like, man, huge divergence, right? So. ये मिड बैंड चल गया 15-10 का यार. चलो एनीवे मैं इधर बिजी था तो ले ओह यार. लेकिन देखो वो जितना ही एक्सटेंशन स्विंग बढ़ी वो तो अब वो 15-10 का मिड बैंड चल गया कि नहीं. अगर किसी ने देखा सिर्फ देख लें वो मिड बैंड बिल्कुल सही चला. So that 15 yeah, it's already gone. Came and touched and gone. Yeah, it's finished. नहीं एरिया का भी एरिया नहीं अभी पूरा हुआ. मैं yes
there are two diversions. To the downside? यार मैं ना एक्सपेक्टेड हाई से पहले नहीं, आज जितने 4 दिनों में उन्होंने मारा है ना, उसको रिवर्स पे तो लेके जाना है. भाई ये देखो 30 minutes के ग्राफ में आपको Bollinger Band. This midband worked for 1510. Why it worked? Everything came into our synchronization. Beautiful trade. And if you take this 15-minute trade, you're making profit. साहब ਤੁਸੀਂ कोई गल नहीं, it's okay. No problem. मैं करता पहले मैं उन्हें दादा फिक्स करता हूँ. सिमुलेशन कर रहा ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੇਮ ਉਧਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੰਡੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ. ये आधा घंटा 6 घंटे के बाद भी चढ़ी हुई मार्केट. इंडिकेटर्स आने में एंड एडिशनल इंडिकेटर्स आने सेट राउंड तो करो, राइट क्लिक करो, इंडिकेटर पे जाओ, करो 6026. नहीं मैं नहीं ले रहा, R2 नहीं ले रहा. क्योंकि अगर यहाँ से नैस्डैक ने पुश लगा ली ना R2 की, तो 14 पॉइंट ऊपर जानी है यहाँ से, और नैस्डैक का इस वक्त कोई मूड नहीं दिख रहा नीचे जाने का. तो एक सेकंड दे रहा. वैसे 6023 तो आ गया ना, आके वो तो एरिया तो हो गया. लेकिन एरिया का ट्रेड तो हो गया था, R2 तो डन हो गया. जैसे आपको चांस मिलेगा. मैं अभी देख लेता हूँ जिस ये क्या लिखा है MACD क्या है ये, उसको डबल क्लिक करो और Both of them now they are higher high. And can I take the other one? MACD आ गया. yeah, it made another mid-band trade. 618. Yeah, it came touched and went back up. तो अब आपके मिड बैंड सही होने शुरू हो जाएंगे. जैसे ही 30-20 सिंक में आएगा, 15-10 के मिड बैंड भी ठीक हो जाएंगे. मिड बैंड टच किया था और वापस चला गया. हाँ, ले लिया आपने, ठीक है, सेकंड टाइम, ठीक है. बैकग्राउंड अप्लाई करो. Okay, which market you're gonna primarily trade? Yeah, okay, because you have to then change the chart. Yes. No, we don't have. So there you go. You're connected. हाँ देखते रहो, कौन सी चीज समझ नहीं आए उसे रिमूव कर दो, जब क्लोज करना है तो नो तो मार दो. Yes, sir. Any desk now? Any desk now? 971 104 500. इसमें लाइक अपना ये भी लगा सकते क्या चीज? हैं वो सिक्योरिटी. हाँ जी, हाँ, लग सकता है इसी के अंदर. बाइनेंस पर ट्रेड ऑन बाइनेंस एक तो अभी अभी देखते हैं कितने 1 2 3 बाइनेंस स्पॉट सब दिखता है. सात है ना. वो नहीं इसमें चलेगा. Okay, so let me do ES H5. Yes, the symbol is called ES H5 or MES H5.
So I will put your DOM here. This is depth of market. This is where you will place the trades. So MES H5. So this is the price for this, and MES H5. So all you have to do is select this account, and then you will pick a trade. So pick the account size, and then let's say you want to put a limit order at 6026. So it's got placed the limit right here. If you want to cancel, you just close or flatten, and it will flatten everything. इस पे चार्ट ट्रेडर है यहाँ पर ये देखें ना. So you can I like DOM in this one. There you go, you're all done. No problem. Yeah, just close and reopen, it will work. So I have to log on via RTrader? No, not our trader, Quant Tower. Is there a icon? I see that one. Yeah, just double click that. And the login side in there? Yeah. Your login is saved. No. Where do I find the login? In my email or? No. सिर्फ आपका यूजर नेम सेव है. So how far is Nasdaq? Somebody asked quickly. Let's do a math here. 450 to 470. 470 divided by 100 is 470 minus 400. 70 divided by 7, 10 points from here. So if ES goes 52, so 26 to. So next area to short, guys, expected high for ES. Expected high. 52 जी. अगर short करना है वहां से. If I don't pass in 1 month, do I pay? No. There's one-time fee. Go to superareas.com. You can get information. So 5 o'clock, just watch the charts and you will see how crazy $1 trillion move. 5 o'clock? 4 से 5 के दरमियान. NVIDIA earnings. NVIDIA की earnings आनी है जी. तबाही फेरनी है. 4 से 5. वेट करें यार, दोनों एंड से, क्योंकि न्यूक्लियर बम फटना है. तो जो शार्पनर हमें ना लगे, तो जब रेडिएशन से बाहर खड़े होंगे ना, तो रेडिएशन कहाँ पर आएगी? जो भी एक्सट्रीम होगा ना वहां से, क्योंकि स्पाइक देख लेंगे ना. So I just hope they do it at before 5, because otherwise reaction will come 6, and then tomorrow, by the way, this reaction will stay in the market. Tesla तो चला गया. अब सारे, this is the last earning of everything, you know. Let me cancel this.
And I just want to add a word of, I shouldn't say wisdom, I'm only 45, much mature. If you have good earnings, don't get excited and try not to share. Please don't share. Because sometimes what happens, the trader next to you is suffering mentally, physically, emotionally, financially. And they're like, why this guy, I've taken a trade, is winning? And sometimes you get excited. I took 4 points, 5 points, 10 points. I don't believe in any of this, but what happens is that negative energy can pour into your mind, and then you can say, all right, I'm winning. And sometimes I've posted my accounts, and next day I've missed the stop loss, and they've gone, right? So avoid getting excited and sharing your results and say, hey, I got a payout, this. It's okay, man. Whatever is in your destiny, you will make or lose, right? But just by some time, then it will make a believe, hey, last time I shared with somebody and I lost an account, right? So so please, that's just yeah. So we at the other users used to have like monitors turned away, right? The next trader would look at it to see what's going on, right? So it's okay, because trust me, everybody, one person is doing a trade, same trade, everything. One is winning, one is losing, right? So it's already done. So My condolences. see, okay. Because we all get carried away, we all get excited, and because one of the 7 deadliest sin I wrote up, one of them is envy, right? Envy is being envious to other people's success can create some problems too, right? So like positive things that if you are doing, the other one is making, yes, it means he's doing better. I should learn. yes. So it should be. But I mean, just showing that sometimes. Yeah, I know. So idea is, if you are, my goal for all of you is, once you are done mastering this software, sit somewhere nicely, comfortably, trade. You don't have to be physically here. The whole idea is not to sit and babysit you guys. Idea is to, you're comfortable, you have seen the setup. Here's my area, here's my higher highs, higher lows. I'll make and as you see, more and more students graduate, then they don't show up after a month there. Because once we take the training wheels off, the last thing you want is a negativity of a person beside you and say, hey, you're winning, I'm losing, and then so it can create that effect, and I do believe in that, right? So, and that's why God doesn't enter this win lifetime building, because one trader is saying, please price go up, one trader is saying, please price go down. So they're like, no, we're not coming to 2601 Matheson. No, it's it's like, अब देखें वही प्रॉब्लम है ना, इंडिया में बिलियन मुसलमान प्रे कर रहा है, पाकिस्तान के 25 करोड़ की क्या वैल्यू है फिर, अब वो उधर जाएगा, तो इट्स दोनों तरफ ही है ना, अब उधर फिर ज्यादा मुस्लिम है ना, तो फिर वो उनके तो majority wins, man. And kudos to Virat, man. What a tremendous inning he put out the other day. For 100, I think finally ICC rankings, your Mr. Gill is going number 1. So. No, sir. सारे ने box कर दियो. And yes. So. ये देख रहे हो, ये हायर लो बंद किया था, उसके बाद जो मैं प्लान लेते तो चल रहा था, वो भी नहीं, अगर यहाँ पे मैं प्लान लिया होता तो यहाँ का स्टॉप लॉस सेट हो गया, तो हायर लो बनने के बाद मिड बैंड पे अगर हायर लो बनाया I confirm whether there is conversion. I know. Yeah, there's a no conversion. You don't need to worry. Divergence, just the line. Yeah, that's a divergence line. Expected highs.
62. Both of them get high at some price. Yeah, you can buy, correct. Everything is good. But because of that divergence line, I would move the order to 30-20 mid-band. 30-20 mid-band. Look at the price, 6016. Yeah. That's just telling That mid-band may not be safe. So in that case, you kind of jumped over and moved the trade to 30-20 mid-band. because all the five indicators are telling us that we're still good. Except that one. The divergence mean my trend is about to change or may change. Look, 30-20 divergence came and trend did not change, right? Now we are in a huge swing again. Right now this is a swing. In my case, I call this current moment is a swing. It has to do a retrace. If there is no extension to the upside, then I will sell after a black candle. So just like a chess player, I have planned my moves. There's nothing random I'm doing. So if this is a swing, हो गया सर 10 मिनट आ जाएगा. So see, this morning I came up with an idea that I'm gonna say we're not trading. We are looking for an opportunity. So if this is the swing, right? Of course, it needs a retrace and it becomes an extension. If there's no extension, it will make a higher low? Black candle to the downside, it would be my entry. So this is the plan for the future that I will go. Or when the price goes to S3, I will sell. Or the third, so my three possible for selling. So let's see what kind of three trades I can possibly take. So right now, okay, first trade is long trade at a mid band here. That's the first trade. So mid band 30-20 or 15-10. That's your first trades. Number two, I'll go short from R3. That's my short planning. R3 is 53, I think. 50. Yeah, exactly. So मैं in between में ले लें. So number three is short. And I'll plan a short trade, but from I swing, retrace, no extension, lower high, black candle to the downside is my sell. So this is, so okay, let's see. All right, we are in a trade. Let's see if I take a trade mid market here because it's a mid band. 6050 short किया. अच्छा आपने वहां से ब्लैक 6015.0. यार लेकिन मैंने लॉन्ग किया ना, देखिए एक पॉइंट आ गया, मैंने मिड बैंड से लॉन्ग किया, एक नहीं 2 पॉइंट आ गया, एक 1.25 आ गया, $62 आ गए. तो मिड बैंड से देखें, एक 2 पॉइंट ले लिया मैंने मिड बैंड से, ऑलमोस्ट $87 तो ले लिए थे, 2 पॉइंट हो गए. कंग्रेचुलेशन. देखिए ना, वो बिल्कुल सही. अब ये इसकी रिट्रेस आई थी. But this is called the retrace with a gap trade. Because retrace थी, लेकिन BB's move नहीं हुई ना, ये देखें. So this is a gap trade. और वो कितना प्यारा ऊपर जा रही है वापस. तो मिड बैंड पे खड़े होना, आपने मिड बैंड लिया और चले गए. 30-20. मैंने कहा था उधर डाइवर्जेंस हैं तो 30-20 पे आ जाएं. Oh man, what a beautiful trade. अब देखिए कोई ऐसे मजाक नहीं है कि मैं जहां से डालूंगा वहां से ट्रेड सही जाएगा. मिड बैंड ट्रेड है सर 100 से. नहीं मैं हाँ अच्छा नहीं कोई गल नहीं देखिए मैंने ट्रेड वही डाला है जो उसमें कोई देख के डाला है कि यार क्या हो सकता है. यहां से मेरे लार्ज ट्रिगर खुले हुए हैं, बैकग्राउंड ग्रीन है, मिड बैंड है, ठीक है यार 2 पॉइंट तो देगा यार. तो मैंने आपको अभी लॉन्ग का ट्रेड बताया था कि ये लॉन्ग का ट्रेड डन हो गया जी,
ठीक है, अब या इसको ट्रेल करें. So I've seen 137 by the way. Let's see. But until colors change, you can hold your trade. Meaning a trail. No, I don't hold my trade means when I see $112, I will put it at break even. So in this trade, I will not lose a single dime except my commission, right? Some users, there you go. I would have gotten out now because I saw 137, I would have locked maybe $12, maybe $25 out of it. And then it came down. Still, I haven't lost that trade, by the way. Where can I hold this trade legally until the color changes on my 30-20 mid-band? Because I'm taking a mid-band trade here. So it did show me $137 so far. Points will go further low, Sir, change the color. सर 5 पॉइंट है, मिड बैंड से 5 पॉइंट है तो $250 का लॉस पे I will exit. And a lot of people will get excited at seeing 130. Yeah, if you only care about 137, you can close your trade, no problem. But you have to take a proper trade without it. Still, I have not closed the trade. Why? Because nothing is telling me to close the trade. And even though zero पे आया है ना, लेकिन मुझे अभी कोई ग्रीन रेड कलर पे मुझे चेंज होगा ना, रेड पे मैं कहूंगा यार इट्स ओके. Nasdaq ने ये पुश लिया ना, ये 700 का ट्रेड बनना है, मैं आपको बता रहा हूं अभी, ये $700 का ट्रेड लेके जाएगा. हाँ, अगर ये चला गया 125 112, excited, no problem, nothing. Again, if you start to plan out your trades hey, at what point will I do what, right? Still testing. There you go. But if it goes to against me, I'll close the trade. But this time, actually towards the 1510, they are not saying. If you're trading on 30-20, forget 15-10. You don't look at 15-10. If you're trading, okay, you got to understand. If you're standing here, you got to look up. But if you are looking up, why are you looking down? If you're trading 30-20, then you don't worry about anything. You don't worry about 15-10. But if you're trading 15-10, then yes, you watch for 30-20. अब ये आपकी लगी है प्रॉपर रिट्रेस. ये स्विंग आई ना, ये स्विंग आई, ये रिट्रेस आ गई, ठीक है. अब देखते हैं यहाँ एक्सटेंशन है कि नहीं, ठीक है ना. 8.75 का था, I'm looking at a loss. नहीं, लेकिन अभी तक तो लेकिन मैंने अभी वो बनता नहीं है ना. ब्लैक कैंडल आपने उस वक्त लिखनी है भाईजान जब वो हायर लो बनाए, लोअर हाई बनाए, फिर वो सॉलिड मिड ब्लैक कैंडल है ना. अभी तो वो ब्लैक कैंडल बनती नहीं, अभी तो वो रिट्रेस की ब्लैक कैंडल है. यस, इट कैन स्टिल डू इट बट डिपेंड, क्योंकि अभी तो ये स्विंग बन रही है ना. मेरे हिसाब से स्विंग, रिट्रेस, एक्सटेंशन, दिस बिकेम द स्विंग. लेट्स सी if it goes back up or down from here. It's too late now. It already, I entered, show me 137. I didn't lock anything. So do lock. If you see 112, lock 0. Then you are not going to have a losing trade. If you see, so the exact method is 10 points. आपको शायद निकाल दे इस ट्रेड में से. आप क्योंकि 9 पॉइंट आ गए आपका. मैंने यहाँ से it's 0.25. ठीक है, ये पता कहाँ तक जा सकती है, इस बॉक्स के अंदर तक 6010 तक जा सकती है. हाँ, So why do you say now the mid-band is too late? no, because if you entered and the price gave you the direction, you don't enter in the same candle again. So if you have taken a mid-band, so that 137 I didn't take, right? And now if it color change, I gotta get out. Now I cannot lose more money than this trade.
So this is my trade ending because the color has changed against me. So this is swing, this is retrace right now. I should have not taken that. It's okay. That was a bit of a risky That trade. was risky. I Risky. saw plus 50 and came out at 25. Because still swing retrace हो रही है अभी. That's risky. अगर retrace लेनी है तो फिर बॉक्स के नीचे से तक लेना है, फिबोनाची बॉक्स के अंदर तक. यहाँ तक तो retrace बनती है. So that will cover my box trade. So my retrace right now is right here. अब देखें यहाँ से मुझे कुछ पैसे देती है कि नहीं. Let me see in the bottom. ये हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ देखें मैंने रिट्रेस भी वहां से ली है बॉक्स के अंदर से. देखते हैं ये स्विंग बनी ना, रिट्रेस आ रही है तो रिट्रेस के 2 डब्बे आए हैं. तो अगर इस डब्बे में से लें या इसमें से तो ये फिबोनाची बॉक्सेस है ना. बाय किया ना, रिट्रेस में बाय किया. नहीं लेकिन इस तरह क्योंकि मैं कितना बाय किया है, क्योंकि ये मैं सेल नहीं करांगा क्योंकि प्राइस हायर लोअर लो तो आएगी तो सेल करांगा. हायर लोअर लो बढ़िया ही नहीं मेरा, तो इस वास्ते मैं बाय कर सकता है ना रिट्रेस. तो ऐसे स्विंग बड़ी ना, ये इसकी रिट्रेस बन रही है. ठीक है, तो रिट्रेस में मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ ना, उस वक्त तक बाय कर सकता हूँ. सेल में उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक लोअर लो नहीं शुरू होगा काम. सो बाइंग इज ओके अंटिल हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज. Lower highs and lower lows is your selling setup. No short yet. Price is coming from a higher high. Like there, why would you short here? This is the price is coming from a higher low, not a lower low. When it makes a lower low, then you can start selling towards the downside. So it has to go below 6,004. Sold at 400. Some users will say, can I sell at 6014? I don't recommend it. Because 3020 is in a retrace. It's not in a, so it may go back up. So really what we're waiting for is 6,004 to go below that and then go back to the mid-band. Yes, then your setups are correct. On 3020, 1510, everything is mid-band. Correct. Higher low से आ रही है 320 का हाई लो से आ रही है प्लस 8.5 now. Yes. 3020 का हायर लो क्या है? ये प्रॉफिटेबल ट्रेड है. मैं तो नजर ये प्रॉफिट इज इट प्रॉफिटेबल? आई थिंक yeah, 137 Fibonacci retracements. Yeah, I bought it. हैं? सर क्या प्रॉफिट करवाएंगे आप कहेंगे यहाँ, फिर आप बताऊंगा अभी कि यहाँ से नहीं ले रहा या क्यों ले रहा हूँ. रिट्रेस थी ना, फिबोनाची के बॉक्सेस का वेट किया, उसके अंदर से बाय करना, तो वो रिट्रेस में आपको कुछ ना कुछ पैसे दे रहा है. First you have to know why I buy. Like again, it's not a beginner stage. Okay. Even though it was magenta and you see I buy it, right? And you're like, why did you buy it? It's magenta. First of all, you have to understand. What is this? Swing, right? Right? What is this? Retrace. Right? It's a retrace. What is this? Extension. Swing, retrace. So my retraces, it's a retrace. So it gave you two. These are called Fibonacci retracement. There is a word for it. I know you just graduated from
2 box color. So that's the trade called the Fibonacci retracement. देखें यार 300 का ट्रेड है यार, कोई मजाक ही नहीं है. जिधर से ट्रेड डालें इंशाल्लाह वहीं से सही होगा. पता है कि कहाँ डालना है ट्रेड, राइट? $225, that's okay. So again, okay, वहाँ 137 थे, वहाँ $25 निकले. ठीक है, मैंने अब मैथ वो कर रहा हूँ. वहाँ मैंने 25 निकाले. यहाँ पर 300 देखा तो 200 लॉक कर दिए. Now let's see, आपका ब्लैक कैंडल बनी है. Let's see. कैंडल बनी है. हाँ हाँ जाएगी. अभी इसको जाना चाहिए वापस. Let's see. ये इन ट्रेंड बन जाती ना तो ज्यादा पावरफुल है. ये भी जाएगी आपकी 8.75 एटलीस्ट. Yes. No. If I want to sell, you know what I will do? Lower high minus 8.5 would be my sell order, right? So what he did was he looked at this number, added 8.5, and entered at a black candle. Exactly at the black candle, right? But the black candle trades are more powerful when they are in the trend. Or if they are outside at a trend change, something. Let's see, I'm stuck in it. Fibonacci is mainly representing support and Resistance. So this is called the Fibonacci support. So look, swing. So Fibonacci support was those 2 boxes. गया सर गया, जिधर मर्जी जाए आप, ये 700 का ट्रेड निकल सकता है. Fibonacci का ट्रेड है. So what happened was I had a swing of 20 points, right? 20 pips. Now अब आप प्रॉफिट में होंगे. अगर ट्रेल कर सकें तो 1 पॉइंट पे लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि इसने अब एक्सटेंशन लेकिन निकल के एक्सपेक्टेड हाई तक जाना है. Right now again swing, retrace, extension बनने की कोशिश हो रही है. Everybody back to the same page again. Swing, retrace, extension. So this midband was not safe at all. So I told everybody, don't take that midband. And so the boxes, somebody asked me about boxes. Yeah. So swing, and at a retrace, it creates 2 boxes. By the way, these boxes will come at every retrace. Swing, so the boxes will come at 38%, and I believe they come in at 52% of the previous price. So I looked at it, I'm like, all right, if it has to take a retrace, it gave me those boxes. So some users are truly playing with Fibonacci retracements. So remember you asked me yesterday, how do I use the boxes? They generally are good for 30-20 Fibonacci retracements, right? So swing, retrace, extension. Still we have up trail current profit. Like, which box we have to take? The bottom one is better. Bottom one, 52. Lower one. Lower side. side of the lower box. लो जी ट्रेल कर रहे हैं. Very good. Sir, at least technically तो तुसी रखना हो 10 ticks. Yes, no. लेकिन अगर ऐसे देखो ना यार 500 का ट्रेड बुरा है यार, एक ट्रेड है. नहीं वाह नहीं है, 20 साल की खुआरी है. हाँ. Now what I will do is I will lock my trades here. I entered here. I will stop maybe in the middle of the bar. I will start. This is my trailing so I've locked the profit from 6011 to 6019. 8 points lock कर दिए, $400 lock कर दिया इसमें से. सर आपने लिया कहाँ से? Fibonacci retracement से. ये आपने मिस कर दिया. No. ये आपने नहीं मैं सुन रही थी. नहीं Fibonacci. So when the Fibonacci comes upwards, नहीं देखें फिबोनाची क्या आएगा. मैं आपको देखें स्विंग आई ना, हर रिट्रेसमेंट के अंदर 2 डब्बे आएंगे. हर रिट्रेसमेंट कलर फर्क होता है ना. ये आई थी ग्रीन में, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट आ रही थी. यहाँ इसने 1 डब्बा इधर दिया, 1 दिया. मैंने ये देखा कि स्विंग है 19.5 पॉइंट्स की. ठीक है, ये 19 नजर आया ना मेरा sharply, right? Sharply right. And then I said, where's the retracement boxes are falling?
So I took inside a box. I just said market inside the box. In between. Bosses, they act like resistance. They support. So Fibonacci retracements are anywhere from 38% to 52%. Right? So इतना आसान है. So whenever we have the boxes in the retrace, we should Go below the नीचे वाला box. नीचे वाला box है. But remember, those boxes are not color background dependent. They have nothing to do with background color. Remember, against the trend, I'm going, right? So my mind is then looking at the boxes, not the background color. Because then the math is swing, retrace, extension. And now it hit my stop loss. I got $400 out of it. अब क्या है? 6022 minus 8.5 is my black candle to the downside. तो हर ट्रेड के बाद अगला ट्रेड रेडी खड़ा है ना. तो देखें 602250 minus 8.5. माइनस 8.75 कर लें. 8.75 कर लें जी. पूरा 13.25 पे ले जाएं. 13.25 नहीं 25 नीचे लाना है. because now it's falling in the Fibonacci again. नहीं ये फिबोनाची वाला नहीं है. अब मैं आपको वापस आऊं. तो मैंने क्या किया 601350 से 25 से. Now why do you see I have a short position here? देखें यहां पर मेरा ऑर्डर अभी फिल हो जाएगा. यहां पर फिल हो गया और ये देखें पैसे बनने शुरू हो गए. जहां से अगेन ट्रेड लगा वहीं से पैसे बनेंगे. $100, $200. Candle to the black side is shooting to the down. मैथ करेंगे. मेरा पिकअप हो गया ना. मैं आपको नंबर देख के बोल रहा हूँ यार 601350 पे ब्लैक कैंडल. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है. फिर और ट्रेड आएंगे. यहां से भी 2 पॉइंट निकल गए. अगर आपकी ब्लैक कैंडल लोअर हाई के बाद आ जाए, बहुत चांसेस होती है कि वो ब्लैक कैंडल चल जाएगी. मीनिंग के लोअर हाई के बाद ब्लैक कैंडल आ जाए टू द डाउन साइड, वो कैंडल ज्यादा पावरफुल है. हाँ, वो ये देखें सर, ये देखिए मैं अभी 5 कितना बना हुआ था 300 325 एटलीस्ट $12 बन गए. मैं 100 नहीं देखता, मैं देखता हूँ कितना लॉक कर सकूंगा. Then you have missed that stuff. Yes. Now, no, not mid-band yet. Not mid-band. Remember, it's not coming from lower low. So, black for a background price must be coming from a lower low. It's still coming in 1510. It's also coming from higher low. Okay. ये देखें वो फिबोनाची के बॉक्सेस को यहां से लॉन्ग कर गया तो वो बॉक्स के अंदर से ले गया. It's okay, no problem. But मैं आपको ये स्विंग है ना, ये रिट्रेस, ठीक है, ये एक्सटेंशन नहीं थी ना, नहीं हुआ ना, तो ये स्विंग बनी ना, ठीक है. इसका नाम क्या हो गया? रिट्रेस. ठीक है, ये एक्सटेंशन बननी चाहिए. ठीक है, तो लोअर हाई से 8. नहीं बनेगी नहीं, लेकिन हम ये वो कई दफा छोटे से छोटा होता जाता है. राइट, सारे इतनी बड़ी ब्लैक कैंडल बनी है लोअर हाई से. स्विंग, यस, रिट्रेस. यहाँ से अगर आगे गई तो एक्सटेंशन हुई, बट इट डिड नॉट बिकम एन एक्सटेंशन. SRE equal S एक्सटेंशन के साथ स्विंग हो गया ना. बट जब यहाँ स्विंग नहीं हुआ तो ये रिट्रेस SR becomes S. तो अब ये स्विंग हो गई, ये रिट्रेस हो गई. There is no extension to it. Now it's making another retrace. So this is a bigger move than this. You go with the bigger move. ये 12 है. You see? ये 14 है, ये 12 है, तो इसने एक्सटेंशन तो बनाई नहीं इससे आगे. इससे आगे तो नहीं गया ना. So now this kind of became a swing of which जो retrace लेगा वो लेगा. अब वो छोटे से छोटा होता जा रहा है काम. Extension, right? Whichever part
extends from the previous to previous move. Yes. This is the previous one, right? This is the previous one. If it goes up, extends from here, that's an extension. If it didn't happen, it's a lower one, right? Daniel sir, हम बोलते कि extension होगी यहाँ से. नहीं I know लेकिन extension होगी. प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक्सटेंशन अभी तक कंफर्म्ड नहीं है Confirmed क्योंकि वो अभी ब्लैक कैंडल के बाद पता लगेगा. हाँ. हाँ क्योंकि ये यहाँ से शूट करके डाउन आ सकती है ना. हाँ. अभी एक्सटेंशन कंफर्म्ड नहीं है. Black candle was नहीं चलेगा लेकिन ब्लैक कैंडल अगर ये वाली आए ये ज्यादा पावरफुल है. ये वाली आएगा आपको थोड़ा डराएगा. जैसा डराया था. No. डराया था. I saw minus 187. Okay, that's fine. Remember, so far there's no extension here. So, swing, retrace, extension, no extension here. This became the swing. Swing, retrace, extension, no extension here. This became the swing. Swing, retrace, extension. So you keep. Black candle बंदी है, buy बंदी है. Extension will get confirmed if it breaks this 62. It has to break this. No, not by yet. Not by yet. No, it's already gone. Came from inside the box and already gone the Fibonacci. When it was coming down, these boxes were forming. When this was coming down, these boxes were forming. Right now, the swings are becoming smaller and smaller and smaller, right? अभी तो देखें इतनी बड़ी स्विंग, फिर ये छोटी हो गई, ये उससे छोटी हो गई. अब वो काम जो है ना कंसोलिडेशन में जा रहा है. Really 12 भी बज गए हैं. Most of the 10 is Wait for the proper setup. That's the question, guys. Swing, retrace, extension. If you're holding from 400, you should hold it. Like price will go to most likely above 600 today, at least 650. You were 100% right. It's gonna come down. नहीं देखिए मैं 100% मैंने चार्ट्स हजारों दफा देखे हैं. देखिए और आप सिर्फ और सिर्फ जाके देखो जहां कलर चेंज हो जाते हैं वही पैटर्न फॉर्म करेगा. अभी आप देखें ये ब्लैक कैंडल ज्यादा पावरफुल है. पीछे जाएं जहां जहां ये सेटअप बनेगा ना ये वाला आपकी ब्लैक कैंडल जरूर पैसे देके जाएगी. हाई एग्जैक्टली. अब ये देखें ये वाला सेटअप लोअर लो लोअर हाई ओ फर्स्ट हायर लो ये नजर आ जाए आपको और ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड बन जाए. आप ब्लैक कैंडल वो वाली लें. हाँ और उससे अगली ब्लैक कैंडल हायर लो वाली बने. लोअर लो हाई लोअर हाई ये वाली ब्लैक कैंडल बहुत पावरफुल है. और जिस तरह हमने अभी उधर देखा. लेट्स वेट सेकंड. ये देखें watch this. You have these setups in 30, 20 all the time. If you just take a black candle, mid-band is okay. Mid-band just requires the following. Both charts are green. Both charts are in the sync. Higher highs, lower lows. They must be in sync. Then otherwise you will have problems. Keep telling you. Your ratio of mid-band will keep going down and down. So make sure price is coming from higher high. I wrote the 5 conditions. Background color is green. Green.
What else? Third one is if the large triggers are green, there's really powerful. If you have a divergence line, go to 30-20. But you see this black candle, my God, this is a powerful black candle. So there's that perfect setup you can figure out. Lower low, lower high, lower low, double top divergence, which is kind of higher low. I see this black candle is powerful. So after this 30-20 works for ES or it is for all the market? No, every market is fine, but this setup has to align properly. So again, I will every day from now say, please don't come in for trading, come in to find the right setup. And today we only pick the right setup trades. Today, to be honest, I didn't focus on my trading. I put in 4 trades for you here to show you that, hey, this is where I'm going to be taking entries, right? So if you have this setup. Okay. All right. So no extension here, right? Look at what has become. So swing, retrace. This is becoming, it has to break 22 now to make an extension. इसको तो ज़्यादा अच्छा हाँ, बनेगा। देखिए ये 3 moves देखते जाएं. सिर्फ last 3 moves are your moves to calculate everything. Yes. Black candle, Yeah. when it breaks, if it breaks, That will become an extension. Yes. breaks 22.5. Then you start buying at Then mid-band. you look at it. Yes. Right now, we're still looking to perhaps get in on a black candle. Correct. To the downside. To the downside. अभी नहीं अभी देखें ना स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन बनाने की कोशिश कर रही है अगर यहां पर एक्सटेंशन ना बने ये स्विंग बन जाएगी we wait for this price to break then we buy in mid band this has to make a higher high first This different box that we look for in the Fibonacci. So should that, I mean, is it at the beginning? at the bottom one because now if there's a next swing you will see the fib boxes they come after every swing. So that is to check whether the support is holding or is it breaking, right? No, that's just it has its own math. 38 to 52%. It has its own math. It's not they work against each swing its own support and resistance. So it has its own landing and like pullback and reversal. This one we will apply on 30-20. 30-20 में जरा powerful है. Number plus 35 permanent. ये चीज उधर भी 30 minutes same thing, 60 minutes same thing, 240 same thing, 1440. If you can open the chart, you're gonna say, "Oh man, I can just look at this over." This is a daily chart, right? This is a daily chart. Swing, retrace, extension. This is each candle is 1 day long, but the math is this. 1440 daily. Swing, retrace, extension. Then you have a swing. I think there's a divergence here. What's the next? Okay. It made a. If you sold here after a lower high, same thing, right? Everybody's saying, is it going to make an extension or not? And so if you sold here, you got, so same math applies on every single chart. We just look at because 15, 10, 30, 20, the trades are coming much faster. Nine to 11 is best for 15, 10, 30, 20. That's great. So now we are, if it breaks 22, it should make it will make a higher high. Then you buy from mid-band. Yes, when you, no. You let it break 22, then your mid-band becomes valid. Your mid-band becomes valid. Not before that. Only trade right now from here is 6021 minus 8.5. That's the only possible trade. Too short, because from lower high, I can make a black candle to the downside. Yeah, if it breaks 6022, it will make a higher high, right? So then your mid-band becomes valid. Then you would take 6021 minus 8.5.
But as you see, the swings are becoming tighter, and smaller and smaller and smaller, right? ये कितनी बड़ी swing थी? 20 पॉइंट, 16 पॉइंट, 19 पॉइंट, 15 पॉइंट, 14, 12, 10, वो कम से like consolidation में जा रही है price. Let's see if this midband, what is 6021 minus 8.5? 60. Let's see. That would be my sell stop. Midband नहीं है अभी अब. But black candle बनेगी. Remember 30, 15, 10, this midband is not safe. Sir, higher high से नहीं आ रही price. Lower. Let's see. What was our number? 6012. Point. Swings are becoming, midband is starting to become flat, meaning consolidation, complete consolidation. Let's see if it gives me a couple of points from here. 601250. Not yet, didn't pick up. .75, no black candle yet. There you go, my order got picked. I got, come on. Is it going to have an extension or not yet? 1 tick, 2 ticks. Smaller the swings, the less chances of the black candle to go in a bigger direction. 2 ticks and 37.50 and 1 point. Done. इतना आसान है काम. 1 पॉइंट में लेके निकल गए. ठीक है ना? ठीक है. क्यों मैंने ब्लैक कैंडल से सेल किया? हायर हाई से नहीं प्राइस आई, लोअर हाई से प्राइस आ रही है. अब आप देखें और छोटी होती जा रही हैं स्विंग्स आपकी. Swing, retrace, extension. Now it's becoming a little bit annoying because देखें वही ब्लैक कैंडल ली टू द डाउन साइड चलती, वो देखें 100 वहां से भी बनेंगे यार, कोई बात नहीं. 112, 115. सर थोड़ा हौसला रखो, ट्रेडर होल्ड करा थोड़ा हौसला. ठीक है, वो अंदर है सर्कल तो बाहर आ गए फटाफट. तीन वारी ठीक है. 150 भी कमाया ना तो प्लान सही किया, हमें 1 पॉइंट मिले. प्लान सही किया ना, तो कोई गलत ट्रेड नहीं डालना बगैर सोचे समझे. अब ये ना कहिएगा अब तो मैं क्या क्या के नंबर ट्रेड करवा रहा हूँ यार, क्या क्या के नंबर. अब यहाँ से लॉस हो गए. यस 6021 माइनस 8.5. मैंने उनसे नंबर पूछा, ट्रेड लगा दिया. मेरे खिलाफ जाता, मैं 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बाहर आ रहा था, क्योंकि यहाँ से 2 पॉइंट बनता है. ब्लैक कैंडल के अगेंस्ट खराब जाए तो 2 पॉइंट तक आप, मीनिंग $100 देखिए माइनस. लेकिन अभी भी $162-75 का ट्रेड जा रहा है. Sir, next time I'm gonna give you mine. That's okay. I used to trade much aggressively when I was in my own office. I rarely get any time to trade like this because I could pick any trade at any point. You just ask me where my entry would be. So I would like, अरे swing retrace. देखिए यार 250 का ट्रेल करें यार, 1 पॉइंट ये फर्क होता है ट्रेल का. मैं क्या करूंगा आपके लिए, यहां पर लॉक किया जाए, बाय स्टॉप कर दिया, ये फिर 350 का ट्रेड बना. कोई बात नहीं. अच्छा वो होगा जिसमें सिर्फ 50 ही बनने होंगे. तो ये किस्मत में होता है. इट्स ओके. सो swing, retrace, extension, just follow that rule and you will not have an issue. And take those mid bands. दोनों ठीक हो, दोनों हायर हाई से आए, दोनों लोअर लो से आए, वो आपके मिड बैंड आपको दे जाएंगे जी प्राइस.
और इतनी स्पीड से गिर रही है इस वक्त. So now the game is to go. Now we will start going short from mid band. Yes, because now things are in sync. So and the third and fourth trade idea is always the extremes, right? Yes. Okay, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 30-20 ਦਾ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ 15-10 ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ सर 15 जिन्हों हाँ सेफ साइड वो रखो. अब देखें $262 में से कितना 325 देखे थे. चलो जी 200 लॉक कर दिए. गुड इनफ. डन. ट्रेड डन. With ES it is so easy. With Nasdaq, man, we can sit and wait and wait and wait. I was waiting R2, still nothing there. Sorry. अब ये मिड बैंड ठीक है जी. अभी कोई इसमें गलती नहीं नजर आ रही मुझे. वेट करें जी, मैं देखता हूँ 1 सेकंड. दोनों हाई से दो लोअर लो से आ रहे हैं. Fibonacci retracements are up there. And even now this mid-band can fail. Don't think that, hey, this is 100%, but we're trying to get the best ratio possible. It touched R1 again on top. Let's see if it हो गया जी mid-band ठीक. 1 point नहीं चेंज हो गया कलर. Not yet. 7.25 है जी. कितने निकाले? 4 टिक्स ले लिए. ठीक है. ਤੁਸੀਂ 30-20 ਦਾ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ 50 ਦਾ ਅੰਦਰ 30-20 6010 ओके. मैंने 30-20 का लिया था. लेकिन अभी 30-20 का तो अब जाके हुआ है. Let's see. It may hit my stop loss, I think. मैंने एंटर किया है 11 पे. मेरी पोजीशन है 11 पे और मैं 13 पे निकल गया हूँ. मेरा 13 पे स्टॉप लॉस है. अब इसका क्या अमकान है कि नीचे है? हाँ, लेकिन अभी मेरा ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर 8.5 तक जा रहा हूँ मैं. 1350 सॉरी मेरा स्टॉप लॉस है. इसने दिखाए थे मुझे $37. मैंने लिए नहीं अभी. It bounced on top of R1. Let's see. Bless you. 1350 is my stop loss. All right, my stop loss got hit.
Only thing I see wrong is it came above the area, above R1. So that's the only issue I saw. It's coming from an area. आपने स्टॉप लॉस अभी चल रहा, आपका ट्रेड है? हाँ ट्रेड है कितना पे रखा हुआ है 40 मैंने भी 14 पे वो जाना चाहिए गया था नीचे फिर उसको चला गया okay now it's going up Yeah, now it's kind of. So, मैंने कहा ना जो हमने लेना है वो सर मैंने ट्रेड को लेनी होती है ना ये हो गया हिट हो गया swing retrace extend. Price is consolidation between R1, R2, R1, R2. FTMO, I'm waiting for the price to go down to very low, like at least one daily chart. So FTMO, my fault. क्या हाल जी? एंटी असिस्टेंट क्यों आ रहा है बार बार मिंजर का एंटी असिस्टेंट आ रहा है बार बार बढ़ आना नहीं चाहिए, आप कोई बटन दबा रहे होंगे। भारत के थोड़ी देर में आ जाएगा कुछ गलत कर रहा हूँ मैं शायद How can I help you guys out? ये आप F1 तो नहीं दबा रहे या कोई? Swing retrace. वो आपने वो नाम का देना फिर आपको रिकवर हो जाएगा नहीं सर बिंड क्या लोअर हाई तो है Interestingly enough, that one worked. Huh. I didn't take that.
नहीं नहीं हो गया है वैसे, लेकिन it was coming from not a higher high though, it's lower high. उससे मिड बैंड पे आ गया, 30-20 के मिड बैंड पे प्राइस दोबारा। हाँ जी दसो, मैं आ जाना 2 मिनट दो। Yes. So in this particular case where the ES is right now on the 30-20, again, it could be a black candle trade, but the thing is that the background is green. Yeah. That's still okay. That's not, because black candle trade is better if it's coming from previous is like a lower high, you know. Yeah, so it's coming from a lower high. No, I mean, look at this. But the previous candle is a lower low. Yes. So in trend, it would be a solid black candle trade, in trend. So 6018 minus 8.5, it should give us something. Yeah, 6009.5, but you'd be shorting it, right? Sure. And even though the background is green, it doesn't matter. Yeah, because that's a black candle trade, right? That's not, I'm not looking at background color. In 30-20, right now it's coming from Lower, then make a higher, lower high. So the trend is towards the down. down, and then first is gonna make no lower high. So how the trade here? नहीं अभी देखते हैं ना, पहले ये बना रहा है इसने 15-10 में तो हायर हाई बना दिया, लेकिन अभी 30-20 में हायर हाई नहीं बना ना। ले से तुझे ओके yes no 30-20, look at 30-20. Yeah, but the previous swing is lower low, not a higher low. Now it's higher low. Okay, take it. Show me. Look at this. Lower low. Lower high. It didn't give you a higher low yet. High when it is higher low, it's Yes. Well, it breaks the trend. Yes, that meaning the trend is breaking. Price is bouncing between R1, R2, and R1. लीजन में ट्रेंड करके आज माइनस में ट्रेंड कर जाता है हाँ और सोचे 450 बनाने पड़ता है नहीं, कोई लिमिट नहीं अगर कुछ ट्रेंड ना ही करे तो ना, कोई प्रॉब्लम। 30 डेज है आपके पास। अगर लॉस किया है किसी आप 800 बना है सर, अगर 400 का लॉस है तो हम 800 बना हाँ, ऊपर वाली लिमिट रियलाइज 450 होनी चाहिए। माइनस प्लस करके 450 करना।
I think everybody waiting for Nvidia earnings today. 21,180. There's no volume at this time. 9 to 11 is primarily the volume. Sorry? I don't know. It's already is down quite a lot, right? So. I think because Microsoft has projected that they are not going to spend much. On the AI thing? 20% of their 20 billion is what they have kind of given the order to. Wow. So the spend is 80 billion this year. 20 billion is 12 billion. 2026 they are also not going to be doing this year. Deep sea and dollar is going to change again. They're not going to let a Chinese company win, though. That's the only thing. It was very bullish on this ESM Yeah, but like at what point it needs a bit of a cool down, right? One stock I've taken for ESM. Which one? ESM. Okay. It's a loss of 25%. Tesla was good. Yeah, Tesla was a good ride, but it came down crazy. I still have Nasdaq S2, guys. Nasdaq S2. Afghanistan what? Yeah. How? Eight runs Afghanistan won. Wow. ये क्या हो गया? नो वो 16 रन चाहिए थे। हाँ हाँ, तो उसके बाद कैसे अफगानिस्तान जीत सकती है? बस जो भी हुआ सर 325 7 हाँ जी, नहीं दोनों ठीक नहीं यार, जो लेकिन दोनों चार्ट द कलर सेम, एंट्री तो 15 10 तो बनेगी। ओके, एंट्री 15 10 तो ओके। मैं थोड़ा समझाओ सर, लाइक आप दूसरे बॉक्सेस ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦੋਨਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਾਕਸ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैकग्राउंड कलर नहीं लोग देखते, वो सिर्फ फिबोनाचीज दी। हाँ ये हायर हाई से आ रही है, सब अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। सो देखो पहले मेथड पिक करो कि ਤੁਹਾਡਾ अगर प्राइस, oh my god it fell down, what happened here? I think some earnings maybe, oh my god, you took it? लेकिन स्टॉप लॉस लगा हुआ था, मैं तो अभी सोच रहा था लगाने का। अब देखे ना, हायर हाई से प्राइस आई और फिर भी वो आपका ट्रेड खराब कर गए। That really came out of nowhere for हाँ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 80 ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਈ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ट्रेड बहुत तेजी ना होते चला गया। Today the evening session is going to be interesting. Oh, today you know, sir, there's एक second. No problem, almost done here. Take care, जी. That mid band broke very fast. It touched and came back already, so it's done. Give me one second.
माइनस में जा रहा है मैं देखा ना ओके, ਜਿਹੜਾ basic rule ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ chart, both charts same color, both charts same color everywhere. So if the price is coming from higher high, you buy at a mid-band, buy. But background color must be green. Must be green. Both of them. And both of them must be coming from, like, see, in this case, price came from higher high, mid-band even touched. If the color change, you exit the trade. ज़्यादा लंबा लॉस नहीं लेना. मैक्सिमम एक ट्रेड ਦਾ लॉस ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ $187 ਯੈਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲॉस ਇੱਕ ਲੋਟ ਤੋਂ. ਹਾਇਰ ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਤੇ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਾਰਪ ਆ ਗਿਆ. ਇੱਥੋਂ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਇਟ ਵੁੱਡ ਗੋ ਅਪ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਟ ਗ੍ਰੀਨ, ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਟ ਹਾਇਰ ਹਾਈ, ਬਾय. both charts red, both prices are coming from lower low, sell. ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲੋ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸੈਲ ਕਰੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੇਮ ਕਲਰ. ਓਕੇ. ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਐਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਕਸਸ ਇੱਧਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਵਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਕਸ ਬਣੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾ ਕੇ ਬਾਈ ਕਰ ਲਏਗਾ. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਬਾਕਸਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ. ਉਹ ਫਿਬੋਨਾਚੀ ਰਿਟਰੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੀਟਰੇਸ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਸਕਦਾ. ਓਕੇ, ਠੀਕ. ਔਰ ਸਮਝਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਡੇ ਇਨ ਡੇ ਆਊਟ, ਬਾਈ ਸੈਲ, that's all. Rest of the, so it went, both Nasdaq went to 404. If Nvidia is down today, we will see a huge push to the downside. आराम से कैसे क्या चल रहा है? कल तो गवा दिए थे, आज एक और गवा दिया. कल 2 गवा दिया, एक और गवा दिया, नहीं जुलाई 2 गवा दिया. आज और गवा दिया. ज्यादा मुझे पे चल रहा, लेकिन मैं एक पे चल रहा था, लेकिन वो भी से उड़ गया आज. खाली 100 बनाने थे. 500 बनते तो हमारा अकाउंट ले लो. मेरे को तभी मैं कर नहीं रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा सर क्या समझा रहे थे, लाइक ठीक है, जैसे फिबोनाची और ये सब मेरे को समझ नहीं आ रहा. तो मैं कुछ कर नहीं रहा था. तो मैं सर से अभी तो पूछ रहा था कि लाइक मैं सुन थोड़ा इधर से, क्योंकि इधर से सर आगे आए थे. अच्छा तो वहाँ मैं बैठूँ ना. हाँ, तो वही कल से मैं वही करूँगा, जल्दी आया करूँगा, उधर बैठा था. Divergence 1510. क्योंकि बिल्ड करना है ना, the best way to test it is your entries start with one method. You say, you know what, a background is magenta, I will take every midband and write down. I took 1 midband, 5 midband, 10 midbands, and see if I took 50 midbands with 1510, how many times it failed, how many times it passed. So like instead of changing it, how do you do
analysis of something called back testing is you pick a method. You pick a method, says, I want to take a mid-band trade. So no conditions. I don't care price is coming from higher high or lower high. Double top, double bottom. Background is sell, I will sell. And take that trade maybe like 100 times in 1 week. And see, all right, every time I take that trade, how many are passing, how many are failing? Then you switch over and say, all right, now I will do my testing on higher highs and lower lows, mid-bands only. I will skip every other mid-band if the color is not matching. So then you then narrow down more. Then you say, all right, this time I will check both 30, 20, 15 times. But you cannot just say, okay, I took this trade, this trade, this trade. Your experiment has to be same. So put down 50 trades. Forget about 100 trades. 50 trades in over 2-3 days, mid-band. Every time the background color is magenta, you will be selling. Background color is green, you will be buying. All right, forget about where it's coming from, where it's doing, right? I'm just simplifying your experiment. And then you say, all right, I took this trade 50 times. How many times I took 2 points? And how many times I took a stop loss? That's how you practice. Move up. Let's say, all right, now I've taken a mid-band trade. Second, I will add a condition. Both colors are the same. Then I will check how many times I'm passing a mid-band. This method. Third method, now I will check 15 green, 30, 20 green, both coming from higher highs. How many times I will pass? Right? So then you will figure out, hey, how many times I'm taking one experiment and it is failing. Then switch over to, after you have mastered this, then you go to Fibonacci boxes. Every time I see a retrace, I'm going to enter from Fibonacci. Like so, these are the boxes, right? So let's see if I want to buy right here. So I bought it, at these boxes are right there, retracement box. Buy कर लिया ना? ये 2 डब्बे आगे buy कर लिया, ये देखें प्लस में जा रहा है क्योंकि इसका तो जहाँ से buy किया वहीं से trade positive गया ना? Already $12 बन रहा है, $25 बन गया. So these are called Fibonacci boxes. So if the price goes inside it, buy it. Then you don't care about background color. Remember, that trade has a completely different math to it, right? In this trade, but if it goes outside of this box, you exit the trade because you can't just keep holding your trade forever. अब यहाँ पर मैंने middle में लिया, इसको छोड़ दिया. Fibonacci 52% retracement. So there are many, many ways for you to take an entry, but pick one and master. एक ले लेना. आपके देखे ना ले लिया. ओ बन गए. That's the Fibonacci box retracement, and it's making money. Don't worry, it's okay. No, they come after. You will see on 30-20. 32. I do Fibonacci retracement. Look, he's making money. Some users only do Fibonacci. They don't do. So you could, if you're in there, you can actually buy. Yeah. So you have to buy. Look, I bought it from. I looked at the retrace. No, 15, 20, 30, 20. 30, 20 की rate. No, लेकिन अभी नहीं, अभी हो चुका है. अभी तो वो बॉक्स ग्रीन बॉक्स में से मैंने बाय कर लिया था या अब ब्लू में आ गया. तो अब आप देखिए ऑलरेडी वहां से मजे की बात क्या है, जैसे ही ट्रेड डाला वहीं से प्रॉफिट शुरू हो जाता है. प्रॉफिट ही वहीं से शुरू होता है. नहीं ठीक है ना. हाँ बड़ी पिछले वाला. हाँ बस ठीक है ना. यार रिट्रेस में, हर रिट्रेस में वो डब्बे बनेंगे और आप बड़े डब्बे नीचे. अच्छा जब रेड आएगा ना, अब अभी देखिएगा, इसको चढ़ने दें, इस ट्रेड को तो देखिए ऐसे हूँ ट्रेल करो सर अगर. अच्छा ठीक. खत्म हो गया ना डब्बा. अब ऊपर रेड का डब्बा आ गया है. अब कुछ लोग रेड में से सेल कर देंगे. ये देखें, अब मैं वहां से रेड से सेल कर दिया. यस
क्योंकि फिबोनाची उस साइड पे आ गया, अब वो ऊपर, अब वो ग्रीन में रेड आ जाते हैं ना, और इस साइड पे वो आ जाते हैं। या एग्जैक्टली फिबोनाची बॉक्सेस, फिबोनाची। अब देखिए उधर से इधर सेल शुरू हो गया। It's okay. If the bigger the boxes, the better the retracement is. Bigger the boxes, so I'll close the trade. How do you do? Go to superareas.com and no, the trade, they always against the trend, so you will be taking a retrace always. No problem. अब देखें किसी ने रेड से सेल किया, 2 पॉइंट लिए, फिर ग्रीन से बाय किया, रेड से सेल किया, ग्रीन से बाय किया, तो निचले डब्बे से बाय कर लिया, ऊपर वाले डब्बे से निकल गए। So that's scalping on Fibonacci level. So you're just looking at the retracement from the ES. Sorry? नहीं फेल, देखें कोई भी ट्रेड दुनिया में 100% नहीं है, हमें चाहिए होता है ट्रेड 70% से ज्यादा। कि अगर आपने 10 ट्रेड किए ना मिड बैंड के, 7 ठीक हो, फिबोनाची के 7 ठीक हो, एरिया के हम कहते हैं 90 ठीक है, 90 एरिया के। अब इधर भी ग्रीन आ गया, नहीं अभी नहीं आया, opposite curve. Yes. This works for Ninja, sir. Correct. अभी बहुत वॉलेटाइल होनी शुरू हो गई है मार्केट, एनवीडिया के डर से ना कि उन्होंने ऊपर जाना है या नहीं। एक सेकेंड, is there any boxes here? No boxes here yet. No box. So wait for the boxes. Forget about 15. We're not doing 15-10. We are only boxes नहीं आए। So Nvidia right now is trading at where is it trading? $132. Let's see. We're just doing the 320 right now, right? 30-20. अब ये ब्लैक कैंडल चली ना, लोअर हाई से जो बनी थी ब्लैक कैंडल चल गई, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ब्लैक कैंडल। कोई बात, हजारों दफा आएंगी, एक दो हजारों दफा आएंगी। अच्छा मैं फिर स्विच कर रहा हूँ चैनल, ये ब्लैक कैंडल की तरफ चला गया। मेथड है ना, 6 मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक चीज नहीं है। अभी मैंने आपको बॉक्सेस एक्सप्लेन किया था ना, अगला मेथड जो है वो है ब्लैक कैंडल का। ब्लैक कैंडल किसी ने लेनी है, ये वो मेथड नहीं है बॉक्सेस वाला, ठीक है। सिर्फ याद रखिएगा, ये ना हो कि एक ट्रेड आप ब्लैक कैंडल का ले लें एक। अब ये ब्लैक कैंडल का कैंडल जो बनती है एंड इट बिकम्स हायर हाई, देन वी कैन टेक, राइट? नहीं, हाँ, लेकिन आपके पास ये जो हायर लो वाली आई, अगली क्या आई? लोअर हाई। तो ये ब्लैक कैंडल ज्यादा पावरफुल है ना, कि इसने नीचे जाना है, ये ऊपर नहीं गई ना, जनरली हायर हाई जाना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट वन क्या बनाएगी? अब हमें इसको तोड़ना है 6018 को पहले, yeah, then it will make a higher high. Yes. So at the bottom of that candle, देखेंगे वो जो अगली कैंडल बनेगी तो देखेंगे। ये वाली डन हो गई है, ये वाली ब्लैक कैंडल, या नहीं जब आएगी, जब बनेगी मैं आपको दिखा दूँ। Next move is either those boxes or there is no mid band trade right now because one is a higher low, one is a lower low. बहुत वॉलेटिलिटी, बार तूफान, $1 ट्रिलियन है दुनिया की कंट्री से ज्यादा की एक कंपनी की पावर, तो वो इसने अभी हिलना है। न्यूक्लियर बम गिरना है हमने। मैं तो R3S3 पे खड़ा हूँ जी,
अब आपका मिड बैंड की जो वो है ना, तारे अलाइन हो गए हैं मिड बैंड के। हाँ, हर चीज मजेंटा मजेंटा हो गई है, तो यहां से मिड बैंड बनता है सेल का। नहीं बेशक दूर, अभी आ जाएगा। देखिए अब कंप्यूटर क्या कह रहा है कि 6005 से सेल करना, सेल करना। कंप्यूटर ने ये आपको नंबर दिया है। हाँ जी, यहाँ जाके सेल का ऑर्डर लगाएं। 1510 ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, सेम प्राइस, बिल्कुल सेम प्राइस है। ये तूफान चलना शुरू हो जाएगा अभी बहुत। एक सेकेंड, आ गया ऑर्डर। वे पिक हुआ जी? नहीं हुआ जी, 50 पे 50 ठीक से पिक हो गया। नहीं यार, होके चला भी गया वो 0.50 पता मेरा। ओके क्योंकि पूरे 5 से तो वो नीचे आ गया था। 5 से तो आ गया। Yeah, I know, but you gotta bring your order down too. Okay. क्योंकि exactly 6005 से उसने 2 पॉइंट दिए आपको, दिए? अच्छा, ठीक है जी, ये वाला ट्रेड था। दोनों सही हों तो सेल कर दें, यही बात थी। लेकिन अब मिस हो गया आपका वो, कोई बात नहीं, थोड़ा आपने थोड़ा ऊपर लगा ली। लेकिन इसी देखें, दोनों रेड थे, दोनों लोअर लो से आ रहे हैं, तो आपका मिड बैंड ठीक है। आपने ये वाला ट्रेड लिया? ओके मिड एस कैंडल ਦੇ ਵਿੱਚ डन सर। Then no more mid band, not in this candle. It's already done, gave you already 2 points in here. That trade मतलब close कर दी like नहीं मैंने एल अब ऑर्डर पिक हो गया। चलो हम वेट करो, शायद 30-20 तक होल्ड कर लो, तो शायद दे जाए कुछ पॉइंट। दे रही है, अगर है तो निकल जाओ। हाँ ठीक है। दोनों देखो, ਇੱਥੇ मैथ की सी, ਇੱਥੇ भी रेड, ਇੱਥੇ भी रेड, ਇੱਥੋਂ भी लोअर लो तो आ रही है, ਇੱਥੇ भी लोअर लो तो आ रही है। सेल करो। हायर हाई तो आ रही है दोनों प्राइस, तो बाय कर लो। दैट्स इट। दोनों बैकग्राउंड, हाँ, कलर चेंज हो या निकल जाओ। Higher high on the other side. On the other side and lower lows. Like look at this particular mid band. 30-20 came from a lower low. 15-10 came from a lower low, and you entered. ये ठीक रहा सर आपका ट्रेड? कोई बात नहीं, आपको अगली एंट्री में करा दूंगा, कोई मसला। ठीक, 5 पॉइंट्स, $250 का ट्रेड। नहीं देखिए ठीक है सर, 2 लो 1 लो, पैसे बढ़ने चाहिए। अब हुण देखो, पहली हायर लो दी कैंडल आई है, दैट इज सेलिंग, दैट्स नॉट ए गुड साइन कि यहां से लोअर लो नहीं बना, तो यहां से हमारे चांसेस हैं कि अगला मिड बैंड फेल हो सकता है। ये बता रहा है आपको। एक्सपेक्टेड लो से बाई करूंगा मैं 21,000 से नैस्डैक, डबल बॉटम, दैट मींस प्रीवियस बॉटम एंड द करंट बॉटम। जाने दे, अब लग गया, अब ये मिड बैंड फिर सेफ हो जाएगा। बट अब मैं लूंगा 30-20 का मिड बैंड, क्योंकि वो 30-20 ओवर सोल्ड होती जा रही है। देखें नीचे,
6004. 001. It moved to 001. No, 6002 is the mid band for 3020. 3020. लेकिन अभी देखते हैं, ये पहले ये था 1510 का मिड बैंड तो गुजरे ना. चल. सर मिड बैंड इस वक्त बना 6001 पे. ओ सॉरी 1510 आ रहा है अभी प्राइस आ रही है मिड बैंड. 1320 में सेल करें. हाँ, दोनों ठीक है. प्राइस जरा 22 पॉइंट गिरी है तो ये मिड बैंड मिस हो गया 2 टिक से. है जी, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਸ ਮਿਡ बैंड ਨੂੰ. ਹੁਣ 3020 ਦਾ ਮਿਡ बैंड ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ. अच्छा फिर ठीक है. 3020 मिड बैंड का बोल के. हाँ, लेकिन वो बेस्ट प्राइस है ना. कंप्यूटर कह रहा है कि अगर सेल करना है तो इतों सेल करो. वैल्यू तो बहुत नीचे उठा गया जी. वैल्यू तो आपका लेट मी सी. वैल्यू एरिया तो अभी 5986 है. उसको उसने टच सुबह ही किया था और वापस. ये अब शायद एनवीडिया की अर्निंग्स के बाद आए वैल्यू एरिया में. यस. अब फिबोनाची बॉक्सेस कहाँ आए हुए हैं 6004 पे. अभी तो ये मिड बैंड टेस्ट हो रहा है. 1510 में देखें जरा. मैं वैसे दिखाने थे. हाँ, दोनों पे आएंगे कि यहाँ से प्राइस के रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा हैं. ऊपर जाते हैं तो ऐसे लगता है, नीचे से आते हैं तो ऐसे लगता है. ये मिड बैंड भी पास हो गया. There you go. टॉप पॉइंट इस मिड बैंड से 1510 आपने लगाया था शायद. नहीं लगाया. मैं तो अपने उस पे 3020. Yes. 3-4 पे around 4. अराउंड 4 पे. Swing, let's see. हाँ, तो ऊपर 6004 पे बनता है 4 ना. पे बनता है. बॉक्सेस का ऊपर सेम ही है. 1510 बॉक्सेस वहाँ पे आ रहे हैं और वहाँ पे मिड बैंड आ रहा है 1320 पे. बड़ा स्ट्रांग है जी. मेरा 350 पे खड़ा हुआ है. आएगा तो ला ही जाएगा.
सी आपको अपना लॉस पता हो ना कि मैंने कहाँ निकल जाना है, अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट की परवाह नहीं होती ज्यादा। लॉस कम से कम हो कि मैंने इससे हाँ हाँ ठीक है। टेक्निकली 6008 तक जा सकता है ये टेक्निकली, लेकिन अभी तो यहाँ मिड बैंड तंग हो रहा है 1510 का। जिस स्पीड से, अच्छा एक की रिजेक्शन वेग नीचे की तरफ है, एक की रिजेक्शन वेग ऊपर की तरफ है। नैस्डैक सर थल्ले दी तरफ आ रही है, S1 तो R1 तो थल्ले दी तरफ जा रही है, इसलिए गया जी, खत्म हो गया ट्रेड खत्म। अब मैं इस ट्रेड से नहीं, सो आई मिस्ड इट बाय 2 ticks, सो आई एम गोइंग टू कैंसिल दिस ट्रेड। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन फिबोनाची बॉक्सेस फिर 1510 वाले चल गए, लेकिन वो बॉक्स के अंदर रेड से गया और वहां से रिवर्स हुआ ना। नहीं मैं सिर्फ देख रहा था, आया नहीं ना था, सिर्फ देख रहा था कि 1510 पे बॉक्स कहाँ बना है, वो 6004 में बना था। बड़ी स्पीड से आई है जी। उफ 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 सर, कोई गल नहीं सर, कोई गल नहीं, हजारों ट्रेड आएंगे। 70% ठीक है। तो सर मैं एक्सपेक्टेड आए क्योंकि बम गिरना है, और अगर गिरा तो नहीं लेकिन अभी तो शायद लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हैं ना, लिक्विडिटी क्रॉड। हाँ पीछे नो सॉरी पूरी दुनिया सिर्फ इस कंपनी को देख रही है क्योंकि सारी हाइप इसी की है जी। आप लाइव कहाँ से चेक करते हैं इनके प्राइसेस? नहीं मैं तो सिर्फ उस पे ट्रेडिंग व्यू पे जाके उसकी प्राइस देख लेता हूँ। एनवीडिया की प्राइस अब डबल बॉटम से आ रही है। Which way Nasdaq will go? Question. $7 ऊपर है आज एनवीडिया। $240 के लोअर बैंड में है अभी। जहाँ पे पैसे मिलने होते हैं वहाँ पे वो होल्ड करके ना पूरा पेशेंस करके ना फिर और लॉस अगले ट्रेड पूरा हो जाता है यार।
लेने कितने मुझे मिल जाती है टेंशन हम कहाँ लेते तो मिल जाती है तो फ्री पड़ी होती है आप कहते हैं वो आपको देते हैं बात ये लगवा दो तो कोई टेंशन नहीं ओके ये सर क्या वो शेयर सेल कर रही है ब्लूमबर्ग क्या नहीं हो नहीं एनवीडिया वालों की आज रिपोर्ट कार्ड आना है कि हमने पिछले क्वार्टर में क्या किया, पैसे बनाए, लूज किए, और अगले क्वार्टर में 3 माह के बाद हम क्या बात करेंगे। तो जो एनवीडिया है वो चिप मेकर है, तो वो उसका आज सारा डिसाइड होना है। ये तो काम हो क्यों नहीं रहा आज लेकिन आज बहुत सही आज बहुत समझ में प्लान आपने जो है ना है समझ बहुत है आज बहुत समझ में आज आपने बिल्कुल बेसिक प्लान करके आज आपने हाथ पकड़ के चलवाया हाथ पकड़ो और आगे चलो नहीं सर ने आज बड़ा जबरदस्त वापस वैल्यू एरिया की तरफ जा रही है जी। वैल्यू एरिया 46 बिग सेलिंग वैल्यू में तो चलेगी एंटर हो गया ना वैल्यू एरिया में दोबारा, तो चांसेस और नीचे जाने के फिर देखें फिल करती है कि नहीं वैल्यू एरिया। Would you take this midnight? या 30-20 5994 या और बॉक्सेस फिबोनाची वाले कह रहे हैं 5998 से सेल करो। हमें फिबोनाची बॉक्सेस ये कह रहे हैं कि 5998 से सेल करें। बट हम लगा 30 में रहे हैं नहीं उसका, लेकिन उसका बेशक कोई ताल्लुक नहीं है बॉक्सेस। कर सकते हैं हाँ ऊपर वाले बॉक्स है यस मिडनाइट तो लियो 1510 वाला मिड बैंड भी चल गया जी। माय गॉड So would you take the 15? 15? yeah, it already came and tested and it worked. Why I was more in towards 3020 because it's severely oversold on 3020.
S1 is done in the morning, I think. Yes. So S10 is already done. Bit of a divergence on 1510. Price went down, strength did not. All right, let's see. Still there is a divergence because previous lows and current lows, yes. उनका दोनों खुले नहीं हूँ नहीं है थोड़ी 1510 का मिड बैंड चलेगा looks like Nvidia report is late. Possible. They may still be creating liquidity to go up, hitting everybody's stop losses to go. Yeah. Value area के तो अंदर आ चुकी है. हाँ 46. जिस हिसाब से जा रही है कोई पता नहीं. S1 पे दोबारा टच किया उसने. Would you play in the bar right now from high to low or no? Too fast. That's generally good for slow market. Waiting for 21,000 for my FTMO. But from here to 4 o'clock, things could drastically change and it could end up at expected high, you know. There you go. Area worked, come and tested S1, went back up. So I'll wait for a candle, make a higher low, then candle to the upside. अभी मैं buy नहीं कर रहा, buy कुछ नहीं करना आपने. मैं 30-20 पे देखूंगा पहले. अभी lower low हैं? No, I'll tell you when my position is going to get ready. मैंने अभी ग्रीन मिड बैंड आपका मिड बैंड तो फेल हो रहा है ना 1510 का भी 30-20 का देखे 87 है प्राइस बहुत सवियरली ओवरबॉट है ओवरसोल्ड है 40 पॉइंट की स्विंग आई है वापस रिट्रेस लंबी लेके ना अभी स्विंग ये बनी है ना आपकी इंटरेस्टिंगली आपका मिड बैंड 1510 का भी पास हो गया
हूं अगर ऊपर का रिवर्स बनता है तो पहले हाई नहीं पहले हायर लो लगेगा, पहले हायर लो, सॉरी हायर लो, करेक्ट, हायर लो लगेगा ना 1510 में, तो हमें एक कंडीशन मिल जाएगी कि ये ऊपर जाने की शुरू हो रहा है। ये देखें अभी हायर लो लगा ना, लेट्स सी, वेट, नाउ आई नीड अ ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड। ना मैं वेट कर रहा हूँ ना, वेट कर रहा हूँ अभी तो वेट 30-20 में ये काम होगा पहले, अभी तो दूर है, अभी तो सेलिंग हो रही है ऑल द वे तक, वो S1 में आ गई है, नैस्डैक भी S1 में आने की कोशिश कर रही है। Let's see, 30-20 needs to make a higher low. Yeah, so no buying yet, no buying yet. For now. 30-20 mid band हो लेने दें। 30-20 का मिड बैंड अभी टेस्ट हो रहा है ना, 43 पॉइंट की स्विंग आई है, हो गया जी मिड बैंड 30-20 का पास हो गया। No buying yet, guys. No buying yet. I thought that 2 points got up really fast because I jumped in and then I got scared that got up. There's no buying yet. Because right now 30-20 mid band is being tested. कोई एंटर हुआ था 30-20 मिड बैंड आप में से? नहीं हुआ जी। Now it's deciding which way it wants to go. Both are synced now. ES and Nasdaq 100% are working together now. That's above S1, that's above S1, so those are 100% working together. दे गए हैं then, हाँ 30-20.
So in order to buy, I'm waiting for a higher low. हायर लो आएगा 30-20 में, तो वहां से ब्लैक कैंडल की एंट्री देखूंगा और बाइंग शुरू कर दूंगा। जो ट्रू एंट्री। जी सर बैठे, मैं आ जाता हूँ। हाँ जी अपडेट तो हो गया बस। अच्छा एक सेकंड, इनको कनेक्ट कर दो। एक बारी डैनियल को देखना, वो फिक्स कर देंगे। There's no buying right now. No buying whatsoever. Because that was a 30-20 mid-band first. No buying whatsoever. Because it wants to test S1 one more time. Nasdaq, sorry. Now you see we have a higher low. That's your first sign. एक आ गया, अभी एक, हाँ एक आना शुरू हो गया। ये आपकी पहला साइन है कि अब यहाँ से ट्रेंड, अभी नहीं, कोई नहीं चांस। 30-20 पे हायर लो आएगा, फिर देखेंगे। हैं? नहीं, सेल भी अभी हो चुका है ना, मिड बैंड दूर है। तो अगर लेना था सेल तो 5983 था आपका नंबर, क्योंकि वो मिड बैंड था, फिर 30-20 का सेल। अब प्राइस यहाँ से कंफ्यूज हो गई है, क्या मैं यहाँ से ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। नहीं देखिए, अभी हायर लो बनाया है ना, पहले 30-20 जिस वक्त हायर लो बना लेना, तो चांसेस है कि आप उसको बाय करो ब्लैक कैंडल के बाद। 30-20 नहीं, 30-20 बड़ा टाइम फ्रेम है ना, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जरा चांसेस मिल जाते हैं। Let's see if this black candle on 1510 is gonna give us something. 5976. Plus 4.75. नहीं, कोई ट्रेड नहीं है जी, कोई ट्रेड नहीं। वरना ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं नहीं, मैं भी नहीं किया सर, वेट कर रहे हैं, 21,000 का वेट कर रहे हैं, 21,000 तो बाय करेंगे। अब देखिए उसने लोअर हाई बनाया, पहली बैटर कैंडल बना के आपकी हायर हाई शुरू कर दिया काम। दैट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट आई एम गोइंग अप नाउ। लेकिन अभी हाले बाइंग नहीं है। नहीं, अभी नहीं बाइंग, अभी 30-20 में कोई बाइंग नहीं है, बहुत वीक है, वीक। लेकिन आपको 15-10 ने जो काम 15-10 करेगा वही 30-20 बाद में करेगा ना। लेकिन 15-10 ने कहा था कि मैंने हायर लो लगा लिया है, मैं जा रहा हूं ऊपर, और वो निकल गया वापस। वो देखें किस, हाँ हाँ
30-20 हाले एजेंडा है हाँ ये हाले भी बाइंग नहीं है, ये बाइंग नहीं है, ये बाइंग नहीं। सिंक नहीं ना ये तो चार्ट कोई बाइंग नहीं है जी, क्योंकि देखो ये 30-20 टेस्ट होएगा, हायर लो जिस वेले लाता उन्हें 30-20 ने, और वहां से फिर हम देखेंगे। नहीं, पहले नंबर आ जाए, मेरे पास आ जाए मेरे पास आ जाए, because I don't have a number yet of a higher low. जो टेक्निकल नंबर बनता है अभी दूर है। अब किसी ने सेल करेंगे ना जो फिबोनाची वाले, वो 6004 से करेंगे। आप पूछे कहाँ से, वो देखें वो डब्बे उधर आ गए हैं, तो वो 6004 का वेट करेंगे। अच्छा तो ग्रीन लाइन आई हो फिबोनाची के लिए आई है? नहीं, वो डब्बे आते हैं फिबोनाची। डब्बे के अंदर एक लाइन है जब 6004 है वो ग्रीन लाइन। नहीं, वो नाइट हाई है, वो बॉक्स के अंदर है ना। नहीं, वो मेरे 4 तक 2 तो लेके 4 तक वो खत्म हो गई जी डब्बे, क्योंकि उससे रिट्रेस ली नहीं उसने, इसलिए हमने ये मिड बैंड नहीं लेना था 1510 का। इवन दो प्राइस वाज कमिंग फ्रॉम हायर हाई, बड़ा चार्ट अभी ग्रीन नहीं होता। यहाँ हायर लो लग गया, ठीक है, या अब हम तैयार हो रहे हैं अपना सेटअप के लिए, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, मसल रिलैक्स हो रहे हैं कि विदाउट ए। अब यहां से देखें 5076 आपका नंबर है, ठीक, 507675 59, I can't read, 597675 plus 8.5. देखिए सर, हायर लो द नंबर दसो। 5976.75 plus 8.5. That will become the black candle to the upside and shoot to the upside. What's the number? Should. The word is should. 598525. 5985 No. 5976. जब ये ऊपर जाना शुरू हो गया वहां से बाय है, बाय है। Buy stop. So what am I telling the computer? That 597675. Remember, lower low, first higher low. That first higher low, I'm getting confident that I will be going to the up now, right? However, from where? I need a black candle to the upside. Where will be the black candle? 597675 plus 8.5. That's where my black candle forms. One tick more, like 50. That would be the ideal entry to go long. 8550, ideal entry to go long. Buy stop. So look, lower low. First it made a lower high, so this was a black entry to the downside, right? But here, lower low, lower high. But here's a higher low. So that's my chance of telling, no, I add 8.5, that's my entry to the upside. Not LL. Yeah. So LL, LH, higher low plus. That is your first cue that my trend is about to change is, remember again, higher high, higher low, and then it made a lower high. That's your cue that I'm about to change. Now, if it makes a lower low, we don't care because my order is in the future. I'm not shorting. I'm not going long from here. It's okay. Jane de. So whatever the number, see, right now I'm not taking a long. I want to go long, but not from here. I want to go long from this number plus. But here's the good thing. If it breaks 75, there'll be a divergence here. So that. It is background green, it is higher. Yes.
and we Correct. use that one. That's Correct. So my right now it has made its first higher low. First, let's see if it goes to higher low. Wait, ब्रेक करके जी नहीं अभी नहीं यहाँ डाइवर्जेंस लग गई है. Look at strength did not go down. Strength नीचे नहीं गई जी. ये वाला ट्रेड खत्म हो गया. वो अपना जो आपने बाई स्टॉप लगाया हुआ था ना वो छोड़ दें. वो यस अब डाइवर्जेंस की लाइन लगेगी और फिर दे. नो प्रॉब्लम जी. अब डाइवर्जेंस की लाइन लग जाएगी 30-20 पे ब्लैक कैंडल पे. कहाँ पर है? 5972 है जी. 59 नहीं 73 है जी. 5973 प्लस 8.5 598150. So my black candle will get confirmed. अभी तो मिड बैंड चल रहा है. एक आपका मिड बैंड फिर चल गया तो 1510 का भी. Price was coming from a lower low. Yeah. So can I? Yeah, online. Yeah. Yes. Sorry? You took it from a mid-band 1510? Good. Take care, boss. Enjoy. So when the stars are lower lows, keep in selling. Still now, finally, everything is in S1 of Nasdaq. Still selling. No buying yet. 30-20 का मुझे डाइवर्जेंस लग रही है तो इसलिए मुझे वो तंग कर रहा है क्योंकि स्ट्रेंथ नीचे नहीं गई. हाँ वो भी नहीं गई. बिल्कुल सही कहा है. बिल्कुल वहां पर भी एक लाइन लग जाएगी. अभी जैसे ही ब्लैक कैंडल आएगी लाइन लग जाएगी. अभी कोई ट्रेड नहीं है. खामोश. हाँ जी सर अभी तो लेट हो गया तो मैं अब कल बताऊंगा आपको. जितनी आपने वीडियो देखी मेरी वो बिगिनर्स वाली. ठीक है कल आए कल कर लेंगे सर. मैं 11 के बाद 11 से 1 को दिखाऊंगा आपको. 11 से 1 के दरम्यान. ये 9 से 11 प्योर ट्रेडिंग हो रही है. हाँ नो प्रॉब्लम सर. नो प्रॉब्लम. लाइन आ गई. बिल्कुल आपने सही डाइवर्जन पकड़ी थी. अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हो पा रहा कि वीक है डाइवर्जेंस. नहीं अभी 30-20 के डाइवर्जेंस का वेट कर रहा हूँ. 5973 plus 8.5 5981. लो जी ब्लैक कैंडल बनाओ यहाँ से. देखिए वो मिड बैंड फेल हो गया क्योंकि डाइवर्जेंस काम कर गई. अभी भी 30-20 का मिड बैंड जो है ना वो रेजिस्टेंस तोड़ेगा फिर देखेंगे.
बाय द वे 30-20 मिड बैंड वर्क तो वो टच करके नीचे आ गया। डाइवर्जन में लेना बनता नहीं है नहीं बाय 30-20 का मिड बैंड हाँ डाइवर्जन में लेना बनता नहीं है। करेक्ट। So the entry would be somewhere 8150. That's where you're. नहीं अभी नहीं सर। बाई स्टॉप का ब्लैक कैंडल बनने देना तो डाइवर्जेंस की लाइन बनेगी। ब्लैक कैंडल बन लेने दें। एक अभी नहीं बनी, डाइवर्जेंस की लाइन ही नहीं बनी। मे बी बीबीज केम और एनफ टाइम फास्ट और एक प्रॉफिट में जा रहा है ट्रेड पीछे होपफुली। हाँ वो निकल जाता है। हाँ नहीं आई नो मैं सिर्फ और सिर्फ उसके यहाँ से ब्लैक कैंडल पे डाइवर्जेंस वाला ट्रेड देख रहा था। उसमें मैं वो LH वाली चीज नहीं चेक कर रहा हूँ। वो एक और है। अभी मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा था, बैठे वो मैं 1800 कमाया मेरे को भी ज्यादा ट्रेनिंग वाली सबका वही है पर है कि 1 घंटे से रापे भाई बोले जा बट मुझे नहीं पता ये believe in the system, believe ये अपना स्टॉप लॉस रखें और बस वही है तो मैं आपके सामने मैं इस चीज का बिलीव है सब लोग सेट हो जाए। मुझे नहीं पता था मिड बैंड लेना है। नहीं मिड बैंड नहीं लेना था, वो डाइवर्जेंस थी, मिड बैंड नहीं लेना। ये ब्लैक कैंडल का ट्रेड था डाइवर्जेंस के बाद, तो इट टच्ड लोअर हाई आ जाए ना। अब मैंने ब्लैक कैंडल वाला ट्रेड लिया और उसमें से 4 पॉइंट लेके बाहर आ गया। 8150 पे ऑर्डर लगा था और 8250 से आपने देखे, आपके साथ लिया ना। देखिए अब मैंने क्या किया, इवन दो यहाँ लोअर लो लिखा हुआ है, ठीक है, लोअर लो। अब आप कहेंगे मैंने बाई यहाँ क्यों किया? मैंने सिर्फ ये देखा कि स्ट्रेंथ नीचे नहीं गई तो पॉसिबिलिटी है कि मुझे कुछ डाइवर्जन मिल गया। सिर्फ टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन डाइवर्जन अभी भी कायम थी, इवन दो उसने लाइन नहीं प्लॉट की। इस ब्लैक कैंडल से इस नंबर को लिया मैंने, इसमें मैंने 8.75 ऐड किए, यहां से लेके मैं 1 पॉइंट लेके बाहर आ गया, मीन 2 पॉइंट बाहर ले। अब 30-20 पे हायर लो लग जाए ना बस, नॉट हाई लो, लोअर हाई। नहीं अभी उल्टा दिमाग चल रहा है। हमें चाहिए हायर लो। नहीं बैकग्राउंड ग्रीन बेशक ना हो, वहां से ब्लैक कैंडल लूंगा और वो चलती हुई ले जाऊंगा। तो जिस वक्त यहां पर एक दफा अगर ये 72 को नहीं तोड़ा इसने, राइट, अगर 72 को इसने नहीं तोड़ा तो यहां पर लगेगा एक हायर लो, ठीक है, यहां हायर लो लग गया। जो भी वो नंबर होगा ना उसमें मैं 8.75 ऐड करूंगा और वहां से बाय स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि वो ब्लैक कैंडल की कंफर्मेशन है। हाँ, ब्लैक कैंडल फॉर्म हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी और हम वहां से ट्रेड लेंगे। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना।
कोई अगर है लो तो बात ऊपर निकल जाती है। देखिए पहले हायर लो लग गया जी आपका। अब ये देखते हैं कि यस अब 7.5 ना टूटा अगर, अब पिछला नंबर क्या 7.3 7.250 very soon the trend is going to change to the upside very soon. कि हमारी पहली कन्फर्मेशन आ चुकी है कि हायर लो लग चुका है, पहली कन्फर्मेशन आ गई है। देखिए 30-20 पे हायर लो लग गया है। नहीं जा सकता, लेकिन ये मेरी पहली कंडीशन हो गई है पूरी कि मैं अभी इसको 72.5 से नीचे नहीं जाना। यस अगर गया तो फिर हमारा वो वी वांट टेक यस यस अभी वो टेस्ट कर रही है बार बार S1 को S2 को S1 को S2 को। Come on, don't break 73. But I am mentally ready. 597425 plus 8.50. 0.25. So 598275. 598275. If it stops here. हाँ नो अगर और नीचे गई तो मैं अपना वो अगर तो लोअर लो लग गया फिर तो फिर मसला है। नहीं देखिए ना नंबर क्या है 597425 प्लस 8.75 5983 बनता है सर। लेकिन वो चेंज हो रहा है उन्हें लोअर लो लाता नहीं अभी नहीं इसका मूड ऊपर जाने का वाला ट्रेड नहीं लाना है बाय लेना ही नहीं होना क्योंकि बात ही खत्म हो। देखिए हमने वो लेना था बाय फ्यूचर में कैंडल के हिसाब से। अब तो मिड बैंड आपका बनेगा ना। नहीं अभी तो वो नीचे और स्टॉप लॉसेस लेने जा रही है। ये निचला S1 का बॉटम रेंज करने जा रही है। यस जान दो S2 दोनों, लेकिन S2 नैस्डैक के लिए बड़ी दूर है। ES के लिए तो करीब है। वैल्यू एरिया भर रहा है कि नहीं आहिस्ता। तो 46 would be a good number। हाँ जी सर एक झटका लग रहा है नैस्डैक का। इधरों नैस्डैक ने 100 पॉइंट गिरना उन्हें 20 पॉइंट आ जाना थले। S2 आ गया जी आपका। You never know by 5 o'clock this could be an expected high. That's the best part about Nvidia. सर 5 बजे आएगी। $130 Nvidia आ गया। 140 टच करके कितना टच करके आए? Nvidia की प्राइस में आपको बताता हूँ। Nvidia आज गया था 133 लगा के आया।
30 पीस का ही है। राफी भाई ये पिछले 2 साल से क्यों नहीं कर रहा मैं? यार एवरी क्लास 1 यही सिखाया जाता है, एवरी क्लास 1। No, but this is amazing. और 15-10 का मिड बैंड 15-10 का मिड भी चला गया। चले देखते, स्विंग दे रही है तो रिफ्रेश करने चले आ रही है आ गई। बंद क्यों कर देते हो? क्योंकि खड़ा नहीं हुआ कद्दू वो पर अभी तो आ रही है। कौन सा असल में 15-10 का मिड बैंड पास हो चुका है। इवनिंग ट्रेड गो लॉन्ग, इवन S2 नहीं डन हुआ, S2 नहीं डन हुआ अभी, S2 थोड़ा नीचे, अगर ये गई तो 60 पे जा सकती है। लेकिन वो 63 ना भी है ना। नहीं 63 ना लो सर, 60 देखो फिर 65 तो मुड़ गई है। 15-10 का मिड बैंड चल गया। ये पहली हायर लो लग गई है जी, पहली 15-10 की, 15-10 का पहला हायर लो 5966 प्लस 4.75। अगर ज्यादा लग रहा है ना MES 2 लॉट, ये अगर आप ये वाला भी ले लेते हैं ना MES 2 लॉट में तो आपकी $50 बनता है, $50 ऊपर आता है। तो MES में करो, ES में चार्टिंग नेगेटिव ईयर मींस $50 का, MES में 10 तक पीछे ही है तो $50। 15-20 में ये हायर लो बनाया है। हाँ तो यहाँ 15-20 कह रहा है, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ वापस, मुझे यहाँ से ऊपर जाना है। यहाँ पर कैंडल का नहीं यहाँ पर आपके लिए फास्ट बहुत है, 4.75 को ऐड करना आसान नहीं है जल्दी से। कैंडल बन के अब ये ऊपर जा रही है। मतलब ऊपर जाएगा तो काफी ऊपर जाएगी। नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन पहले 30-20 का मिड बैंड खड़ा है, इसीलिए मैं ब्लैक कैंडल 15-10 में नहीं करवा रहा आपको। No trade whatsoever. It is. ये देखिए अभी 30-20 का मिड बैंड टेस्ट हो रहा है। बाई कैसे था? नहीं अभी सेल था, लेकिन 30-20 का थोड़ा लेट हो गया, सर 30-20 देखो टच हो गया है। हाँ फिर वो इतना करो ना, टच नहीं किया तुसी, ट्रेड नहीं पाया, वहां से सेल था और आपको दे रहा है ना 1 पॉइंट। थर्टी 20 का मिड बैंड देगी आपको पैसे, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, it's okay. No. Money is money. It's as long as you are taking your entries correct. Because no. But the problem is, it's your mind is acting differently. Yes, there is Saturday seminar this weekend. By the way, the trade that you took on 30-20 was a gap trade. Look at the BBs and strength did not touch mid-band.
गैप ट्रेड में क्या होता है? गैप में वही मिड बैंड पे खड़े होना है, नहीं, गैप ट्रेड का मतलब क्या होगा? प्राइस मिड बैंड पे आई, स्ट्रेंथ मिड बैंड पे नहीं आई, मीनिंग के सेल में ही रहना है या नीचे हाँ कोई गल नहीं, फिर आएंगे बहुत ट्रेड है 9 to 12 वाला टाइम 9:30 to 12 ना 10 to 12 नहीं। हाँ और ES 2-4 अच्छे ट्रेड दे जाती है, 2-3 मिड बैंड के हायर लोज लोअर हाइज दे ब्लैक कैंडल के। हाँ 5 वो कहते हैं 5 मैक्सिमम। दोस्तों बनाना है 200 मान गया अगर मैं 200 लॉस लाना है 200 लॉस हो गया तो अकाउंट वन कल मेरा पहले दिन 280 बना था ना, कल मैं 1 देखा आज तो मैं 400 पे लॉस पे गया, फिर दोबारा 500 निकाल लिया तो 150 पे लॉस आज मैं कोई लॉस पे Now we just sit and wait to see which way it's gonna go. It's at S1. खड़े खड़े भी होता भी ना इससे लोअर हाई से थोड़ी थोड़ी लोअर हाई से पहले बनाए ना लो, पहले हायर लो बनाए, पहले हायर लो बनाए। या मैं नहीं करूँ क्योंकि S2 पे खड़ी है। अभी कुछ नहीं है जी, बाय नहीं है, सेल नहीं है। ये S2 ना होती ना देन या R पे खड़ी होती तो फिर ज्यादा बेटर था। S जोन में मैं कैंडल टू द अपसाइड दूंगा, तो जैसे ही लोअर हाई लग गई वहां से डाला 8.5, वहां से हम बैठ जाएंगे गाड़ी में। तो सर वो भी हमारी तरह नहीं है कि बहुत बहुत पॉइंट बैठे हैं, वो बस 10-10 5-5 पॉइंट लेके निकल रहे हैं। That's it. ओए होए होए यार, उफ, अब ये डाइवर्जेंस फिर लगाई है जी। S2 is testing again for ES. S2 दूर है जी, S2 बहुत 21,100 दूर है अभी।
विक्रम भाई डाइवर्जेंस की कैंडल है वैसे 59.64 प्लस 8.5 59.72.50 यहाँ से बाय बनेगी अगर डाइवर्जेंस पास हो गई। अभी तो ये कोई उसका ये तो S2 टेस्ट कर रही है 60 ठीक लग रही है। मैं एक सेकंड देना उधर बढ़िया जी 120 इस वेले चल रही है 21,000 30 पॉइंट 30 रुपए 7 ए बंदे 4 पॉइंट सर 60 बनता है। अगर इधर 60 आ गई उधर S2 पे चली जानी है नैस्डैक S2 पे चली जानी सर 21,120 है ना। अगर एक ट्रेड है सिर्फ 596350 प्लस 8.5 बाय था नहीं वो तो बाय बनेगा ना वो बाय बनेगा लेकिन अगर फ्यूचर में बाय करना है तो ठीक है 6 नंबर चेंज हो गया जी S2 की तरफ जा सकती है जी नहीं उधर आपकी नैस्डैक का थोड़ा सा पॉइंट रह गया 60 पे S2 पे आ गई है जी। नैस्डैक को अभी थोड़ा सा टाइम है तो शायद ये नीचे और जाए। हाँ ये आ गई जी नैस्डैक S2 में आ गई 130 इसने लगाना है। एक सेकंड दीजिएगा बस। हाँ जी नो हाँ यहाँ से नहीं आएंगे जब तक आप उधर जाके कैंसिल नहीं करेंगे डेट अकाउंट ट्रेडोवेट की वेबसाइट से लेजेंड्स में लॉगिन करें और एक को कैंसिल करें। लेकिन फिर आपका रिन्यू वाला कुछ होता है वो फिर आपकी सेल खत्म हो जाएगी ना यहाँ से नहीं आप निकाल सकते। अच्छा तो अगर मैं वीकेंड से निकालता हूँ तो फिर वो खत्म हो जाएगा। हाँ जी फिर सेल खत्म हो जाएगी आपकी। किसी ने 60 पे लिया था जी 60 ठीक है तो फिर मुझे रखना पड़ेगा। यस ट्रेडोवेट से निकाल सकते हैं ट्रेडोवेट से नहीं वो भी नहीं निकाल नहीं सकते S2 डन नैस्डैक यार बिल्कुल ही बेचारी ना 127 से चली गई। पंद्रह दस की में वैल्यू ज्यादा नहीं है 30-20 में ज्यादा है। अब फिबोनाची क्या कह रहा है 59 70 69 या अभी तो ये मिड बैंड पास हो गया आपका।
मैंने 60 पे लिया बाय द वे, आई हैड भाई लेना था S2 का, क्योंकि 63 मैंने इनको मना कर दिया था। मैंने कहा यार वो 65 से बाउंस हुआ है, 63 ना लीजिएगा, 60 ले लें। 60 पे वो थोड़ा सा नीचे गई मेरी 1 पॉइंट, मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 59.75 पे ठीक है, ठीक है, और 5 टिक लगे। वेरी गुड यार, क्योंकि ये गुड सपोर्ट है ना यहाँ पर। तो ES का तो एरिया, नाउ इट्स टेस्टिंग मेरे हायर लो, लेट्स सी one more time trying to test S2. नहीं, एक दफा एरिया हो चुका है जी, एरिया हो चुका है 59.61। अब मैं यहाँ से 4.75 अगर करूं कैंडल को तो नैस्डैक सर 100 बहुत जल्दी से गुजर गया जी, आ गया जी, आ गया। All right, guys, I gotta go. Thank you very much. It's 10 minutes and I'll call it a day. एरिया नहीं, इवनिंग एरिया देखिएगा, क्योंकि वो जो 8 बजे आएंगे, क्योंकि रात को चलना है एनवीडिया के फायरवर्क्स। आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि आज रात क्या होना है, और कल दोपहर तक ये चलते रहना है। नहीं, वो तो आपको आ जाएंगे ना एरिया। हाँ, तो अब दोनों साइड पे लगा देना। हाँ, लगता है, बिल्कुल लगता है। हाँ जी, एक शॉर्ट करें उसका स्टॉप लॉस लगा दें, एक लॉन्ग करें उसका स्टॉप लॉस प्लीज। लेकिन अगर आपने एटीएम लगाने हैं 10 माइक्रो 1 मिनी करें, दोनों साइड पे एटीएम लग जाएगी, वो एक ही चीज होता है। 10 माइक्रो नॉस्डैक और 1 मिनी नैस्डैक, एक सेम थिंग, फिर एटीएम लग जाती है 100%। तो हर चीज का जुगाड़ है पाकिस्तानी। 10 माइक्रो 1 मिनी बनता है, तो वो फिर इक्वल हो जाता है। यस, करेक्ट। Again, mid-band keeps working. अभी लॉन्ग नहीं करना जी, अभी यहां से देखते हैं। अब लॉन्ग नहीं करना until you have a higher low on 30-20. Which mid-bands to avoid, which mid-bands to take, everything is all recorded. If anybody wants to go and watch it, it's on YouTube. Every single thing got recorded and uploaded. Let me just make it 8 more minutes. I'll do this stream. Here you go. You guys learned some new concepts. Which mid-bands you can easily avoid. I have some faith in it. Including me. सेटअप बनने दे, पूरा सेटअप बन जाए, नहीं फेल होंगे। ऊपर से सेटअप बनाया था वो 30 पॉइंट नीचे आई, हम नीचे से सेटअप बनाया था 20 पॉइंट ऊपर गए। मैं 20-30 पॉइंट नहीं चाहिए, 4-5 पॉइंट चाहिए। इतना लेकिन कितना हौसला है ट्रेल करने का। वो 100 देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, बंद करो जी, दैट्स इट। तो
और उसके बाद 12 बड़े अच्छे लगते हैं। और उसके बाद $12.50 भी बहुत अच्छे लगते हैं। I think it's a $600-700 trade, right? You're leaving, but you just leave it $12. मैंने आज आपके 2 ट्रेल किए हैं, बड़े बड़े $400 के। I did 2 trades. I did 4 trades today. सेटअप बनने दें, हायर लो आने दें, लोअर लो के बाद ब्लैक कैंडल के बाय करें। मेरा तो सारा मेरा जो लॉस किया है वो इट वाज क्या कहते हैं मिड बैंड फेलियर। तो जो सबसे पहला वाला था वो मिड बैंड फेलियर था, तो मैं बैठा रहा। फिर एक ट्रेड आया मिड बैंड नहीं, अब नेक्स्ट टाइम प्लीज मिड बैंड लीजिएगा यही देख के। स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन 30-20। हाँ या तो Yeah, 30-20 trades करो, तीनों। Okay, great. Oh, I don't understand. all right. I'm just surprised I have to revisit the chapters from Daniel, like higher low, lower high, make higher, like I really assume that 4 lectures later everybody is ready to enter. So people don't realize that it's right in front of them. Even I didn't realize it till I started practically doing it this way. फिर आपका मिड बैंड नहीं फेल होगा, गारंटी। हाँ, mid band fail नहीं होगा। हाँ, आपको कहोगे यार ये मिड बैंड क्यों नहीं चला, उसकी रीजन थी क्योंकि वो 30-20 रिट्रेस ले रहा था या 30-20 एक्सटेंशन बना रहा है। The moment you see a higher low after a lower low, that's your cue, भाई जा रहा हूँ यहाँ से मैं। और लेकिन कई दफा स्विंग छोटी आती है लेकिन फिर भी वो ब्लैक कैंडल दे जाती है। See, there has to be a loss somewhere. Yes, मोमेंटम के टाइम पे सबसे अच्छा होता है। और नीचे ले गए जी, और नीचे ले गए, दोबारा S2 की तरफ 54 लो। I wish I could do the same with the FTM. FTM बनाने हैं। FTMO के नामों से आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन एफटीएम में जरा थोड़ा एरिया देख के, क्योंकि ये इन्ना 240 तो बाहर है, 60 तो बाहर है। नहीं जो मिड बैंड वाला नहीं फिर बहुत तेज हो जाता है उधर। प्राइस देखो कि फर्क बहुत आ रहा है प्राइस था। या फिर मार्केट ATM पे नाम लगा नहीं लेकिन तुसी इधर ला नहीं सकते ना। ये क्या दिखा रहा है? आप देखिए आपका ट्रेड सिम में लगा हुआ है, डिस्कनेक्ट करें और रिकनेक्ट करें तो सही हो जाएगा। एक क्लोज के उसके बाद अपने आप आ गया है। आप ट्रेडोवेट में देख लीजिएगा। हेलो 215 it should be. मिड बैंड है ना। Yeah, gap trade. I know. यहाँ से देखो इसमें लोअर है बना दिया। हाँ ठीक है, हाँ बनेगा इसका 1.7 ले सकता हूँ, but it was more of it's an area S2 के एरिया पे इसमें हमने नहीं दी, वरना अभी भी इसमें बहुत अच्छा बना के दिया। यहाँ से अगर लेते यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आती है, हाथ में निकल जाती तो कंप्लीट बीच में से जाती नहीं, पता नहीं था कब ये चेंज बीच में से नहीं जाना, यहाँ यहाँ से 8.75 हाँ वो इसके नीचे यहाँ पे 8.75 तक यहाँ पर आया था, इधर आया था यहाँ से यहाँ make your 100-200 and come out because you're not used to trading. There you go. We are in S2 officially. Nasdaq officially is inside the S2.
सर प्रॉब्लम इन सिर्फ लग रही है अगर इनविडिया की अर्निंग बुरी आई ना एक माइक्रो तबाह कर देगी क्योंकि फिर नहीं 21,000 ते लॉन्ग करो 21,000 पाना है तो एक्सपेक्टेड लो FTM नहीं 21,000 का नंबर 100 पॉइंट दूर जान दो मैं 21,000 जो यहाँ का नंबर होगा अगर गई ना गई तो क्योंकि वो बड़ी जल्दी आ जानी है 100 पॉइंट नैस्डैक अगर ये गई ना $116 पे चली गई अभी 130 पे ट्रेड हो रहा है एनवीडिया अगर ये चला गया 116 पे आ रही है जी बड़ी स्पीड से आ रही है सही लग रहा है टेस्ला को सब कुछ टेस्ला इज डाउन टू $290 485 से लेकिन चली कहां से थी 220 से हाँ एग्जैक्टली तो वो जितनी चर्बी है मेल्ट हो गई है टेस्ला की तो नो लॉन्ग अंटिल एक्सपेक्टेड लो गाइस why the price is different than yours which is I'm doing ES contracts it shouldn't be Why then we are worried about our $100, $200 loss? तो अभी आ जाने लगा तो चलेगा 5वां दिन हो गया जी बैक टू बैक एक्सपेक्टेड लो आ रही है बैक टू बैक आज वीक नहीं थी ऐसे जिਵੇਂ चली थी ना ऊपर एरिया फिल हुआ जी आपका मैं सरोज जी को माइक्रोनॉल 10 नहीं वैल्यू एरिया ओवर देखो 46 तो मुड़ गया ना वो मैं देखी हाँ क्योंकि मैं 46 का वेट कर रहे हैं ना वैल्यू एरिया पूरा भरिया है उन्हें कह रहे थे ना 20 पॉइंट दूर है वो देखो आ गया 46 ते आ गया सी वो बड़े प्यार ना उन्हें आके वैल्यू एरिया स्लोली भरता नहीं 46 हैगा ना 46 है ना वैल्यू एरिया बॉटम उन्हें ऑलमोस्ट 80% वैल्यू एरिया ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ So 60-46 is my number to think about something. Let's see. All right, I gotta go. 2 to 4 is a good time to trade? Yes, 100%, because that's it, the next volatility zone. सिम नहीं दिखता डिस्कनेक्ट करें नहीं हाँ फिर दोबारा जाएं और फिर ऑन करें सिम का किसी से कोई ताल्लुक नहीं no mid-band I'm not taking no mid-band maybe 30-20 but it's because it's below S2 अब मैं ऊपर की तरफ का वेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से दोनों मार्केट्स S2 से बाउंस हो रही हैं मुझे सिर्फ एक लोअर हाई चाहिए ये मिड 15-10 का मिड बैंड तो वैलिड गया everybody's dumping Tesla and everything Tesla is no longer a $1 trillion company. सारा वापस कर दिया 500 बिलियन लूज किया है in less than a month और गेम भी उसी तरह पागलों के 30 sorry
इतना लॉस कैसे हो गया टेस्ला को? ना, क्योंकि ओवर हाइप्ड प्राइस थी ना। देखिए जब उसने इलेक्शन किया, इलेक्शन के पैसे डाले, प्राइस बन गया, टेस्ला वो ऊपर चला गया, राइट। लेकिन दैट्स नॉट रियलिटी। तो 213 का स्टॉक 484 पागलपन है। जिन्होंने पैसे बनाए उन्होंने तो बनाए ना, लेकिन यस पीपल नाउ एवरीबॉडी इज टेकिंग दैट प्रॉफिट्स, राइट। तो वो फिर now Tesla is finally, he should go on Twitter and write not T anymore. ਇੱਥੇ 15-10 ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਰ, लेकिन 30-20 ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ रहे हैं। I'm not selling any. I want to go into buying zone soon, but I want to get it a higher low first. मेरा ख्याल है सारों का लिक्विड करके स्टॉप लॉस लेके तो उड़ रहे हैं जी अब। अब नहीं इनके पास। I think now I will shut go back. All right, see you guys tomorrow. तो अभी शाम को 4 बजे तक करना हो तो एरियाज को दूर दूर बैठे हैं। एक्सपेक्टेड लो तो आने वाले। हाँ, फिर अगर और गिरी तो एक्सट्रीम लो से भी नीचे जा सकती है। हाँ, पिछली बार भी गई थी ना, तो दिया था। एनवीडिया की अर्निंग्स हैं, मैं नहीं कहूँगा ट्रेड करें आप। अब विक्रम भाई ने बोला अब ये मिड बैंड टेस्ट हो रहा है, वेट करें। अब कुछ लोग फिबोनाची वाले काम बैठे हैं 5965 पे। हाँ जी, वहां से वो सेल करेंगे। because of NVIDIA there is अभी तो कुछ नहीं। जिस दिन मेटा और माइक्रोसॉफ्ट आ जाते हैं, गूगल और अमेजोन आ जाते हैं, वो ये 8 कंपनी हैं जो सारों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इनकी अर्निंग अच्छी आती है तो तो स्टॉक मैं लगा दिया 6965 पे सेल। हां सर, बट ये ग्रीन हो गया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिबोनाची कर रही हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है ट्रेंड से। सर फिबोनाची जो वहां से वो हिट करके नीचे आना चाहिए। कायदा कानून को चलता है। मैंने सेल में लगाया हुआ है, तो नीचे जाना चाहिए ना फिबोनाची। जितना पता मैं सही लगाऊंगी तो पैसे बनाऊंगी, दूसरा लगाऊंगी तो नहीं बनेंगे।